काफी समय बाद मिल रहे हैं। हालांकि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर हम हर महीने वेबिनार के थ्रू मिला करेंगे। आज के इस वेबिनार का मेन फोकस रहेगा सेक्शन 194, जो कि इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस हुआ है, 1 जुलाई 2022 से शुरू होना है। इसके लिए हमें सेक्शन 194 पर चर्चा करेंगे सीए मनोज कुमार जी, जिसको सप्लीमेंट करेंगे हमारे साथ में जसपाल सिंह सेठी जी भी। और इसके साथ साथ इस सेक्शन का हमारे पर जीएसटी का क्या असर रहेगा, जीएसटी के अंदर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके लिए गौरव जी हमें सब चर्चा में बताएंगे। साथ ही साथ हमारा टॉपिक रहेगा, आज का सेकंड टॉपिक होगा एम्प्लॉय सेकंडमेंट, जिसके लिए हमारे पास सीए शुभम खतान जी हैं कोलकाता से, जो हमें विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमने आज के लिए रखा हुआ है इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो अभी ये डिसीजंस लिए गए थे 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और लेटेस्ट अपडेट अंडर जीएसटी, जिसके लिए हमारे पास आज के स्पीकर रहेंगे सीए हिमांशु सिंघल जी रेवाड़ी जी से। और लास्ट में हम क्वेरी आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। हम इनवाइट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रेसिडेंट श्री मनमोहन गुप्ता जी से वेलकम एड्रेस के लिए। मनमोहन गुप्ता जी प्लीज। Suresh ji, thank you. Friends, I welcome you all in the meeting, and I also welcome all the learned speakers. बाकी तो सुरेश जी ने सब बता ही दिया है कि what will be the topics in the meeting to be held today. और हम काफी थोड़ा सा गैप के बाद मिल पा रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2 years में ऐसा पीरियड रहा है कि जिससे मुलाकात बहुत कम हो पाई है। इसी ड्यूरेशन के बीच में we have lost a great professional, Advocate Raj K. Batra. I think every member know him very well, and he was a very great professional and mentor to all of us. So before we start our meeting, I would request all of you that we should keep a 1-minute silence for the peace of departed soul. So silence please for 1 minute. Om Shanti. Friends, today topic about the section 194R of the income tax is applicable with effect from 1st July 22 is very important, as it has many important provisions for the businessman. However, there are certain exemptions and other things which learned speaker will tell you. But I will request one thing, there is the provisions include one thing very important, कि the companies till now are giving traveling to the persons who have achieved their target, and that traveling was not taxable at all in the hands of the traveled person. So this provision have to be looked into that thing. I think that is going to hit that point. With this, I request Mr. Suresh Agarwal to continue the meeting. थैंक यू सर। आज की स्टडी सर्कल मीटिंग को शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम एम्प्लॉय सेकंडमेंट के ऊपर स्टडी करेंगे, जिसके लिए हमें बताएंगे सीए सुभाष खैतान जी। तो आई रिक्वेस्ट सुभाष खैतान जी टू प्लीज स्टार्ट द डेलीगेशन। सुभाष जी प्लीज। शुभम खैतान जी, आई एम सॉरी, शुभम खैतान। सॉरी, शुभम जी प्लीज। Sure. Thank you so much to Star. Thank you so much to Manmohan sir, Himanshu ji, Suresh ji, and special thanks to Gaurav sir for having me here, and all the dignitaries of Star and all the members. Thank you so much for having me here.
It's my pleasure to address this august gathering. With your permission, Gaurav sir, can I share my screen? If you can give me the right. I have done so, sir. Please do. Thank you. Shubhamji, if you can also be more audible, some members are saying they are not hearing properly. Okay. Is my voice now clear? Is it better now? Hello? Members can please use chat box to put their comments. Hello? Is my voice audible? Can you please put me your comments? Yes, Shubhamji, please continue. Yeah. I have been allotted a very interesting topic on secondment of employees. I think this has been a landmark judgment of Northern Operating System, wherein after a flurry of judgments that we had on this issue from different tribunals across the country, we had a favorable outlook towards taxability on this, because most of the MNCs are going through this, where the employees of the foreign entity is deployed in India, and the employee who is deployed in India is usually paid salary by the foreign entity, for which the amount is reimbursed by the Indian entity to the foreign entity. If we understand the facts of this case of Northern Operating System, we'll understand as to how this whole transaction works and what would be the taxability on this, and how the whole gamut of the law, which has worked out right from the beginning till today's date, how has it worked out, and what is the outcome which has been of the Honorable Supreme Court, and what may be the implications of this. This is what our topic would tentatively be covering today. So let me discuss the facts of the case so that you would have a better idea as to what is the usual transaction that occurs in case of secondment of employees, and what is the implication that may be occurring on this. NOS means Northern Operating System. Northern Operating System is an Indian entity which is engaged in provision of various services, which may be business auxiliary services, and manpower supply services is also part of Northern Operating System, back office support operation services. All these services are being provided by Northern Operating System, which is the Indian entity. Now, this entity has a number of group companies throughout the world, in US, UK, Ireland. Now, at times, Northern Operating System receives certain projects for which it needs high-skilled managerial employees. These employees are not directly working under Northern Operating System. They are working for the group companies, or rather they are on the payroll of the group companies, as I should say. They are on the payroll of group companies, and as and when required, they are transferred to the Indian entity. The employees are requested by the Indian entity. Thereafter, the foreign entity transfers certain employees or deputes certain employees or second certain employees for a certain time period. In India, these employees thereafter, they act as per the instructions and directions of the Indian entity. So even though these employees are foreign nationals, even though they are on the payrolls of the foreign entity, when they come to India, they act as per the instructions and guidance of the Indian entity, right? Thereafter, these employees receive their salary from the foreign entity. So all salary, bonus, any social benefit, or any social security benefits which are provided in their home country, right? Now, since these amounts are paid since these amounts are paid by the foreign entity, but these employees are working for the Indian entity. So these Indian entities, what they do is they reimburse this amount of salary to the foreign entity, right? So let's say I am the Indian entity, you are the foreign entity. Now I need some managerial personnel for performing certain high-skilled tasks.
So you depute your employees to me, and they now, let's say you deployed for 2 years, those employees now work under my direct supervision and control. They act as per my guidance, they act as per my instructions. And the payment of the salary of those employees are made by you. You are the foreign entity. Why? Because they are on your payroll. They are getting social security benefits in your country. Since they are being paid salary by your entity and the employees are being used by my entity, I have to make payment to you or reimbursement to you for the amount of expenses which are incurred, right, by you in the form of salary. In this case, there is no markup. All I am paying you is the exact amount. There is no profit element embedded in whatever I am paying to the foreign entity. NOS, which is the Indian entity, is paying to the foreign entity without any markup. Now, this transaction seems pretty straightforward, which is pretty standard when it comes to most of the foreign multinational companies when they are working in India. Now, the department said, since these employees are deputed by the foreign entity, department asked these entities in India to pay taxes under reverse charge, under the category of manpower recruitment or supply agency. So, in the opinion of the department, manpower recruitment or supply agency services are being provided by foreign entity to the Indian entity, and the Indian entity should be paying taxes under reverse charge. Obviously, the Indian entity said that this amount is not liable to tax in my view. They said that this amount is nothing but salary paid to employees as part of employer-employee relationship, right? Any amount which is paid out of employer-employee relationship is not liable to service tax. That's why we are not liable to pay this amount under reverse charge. This was the whole area of dispute which had occurred here, right? Now, this matter went before the Honorable Bangalore Tribunal. Bangalore Tribunal tried to understand the meaning of manpower recruitment or supply agency and tried to explain whether this would fall under manpower recruitment or whether this would be considered as a contract of service or an employee-employee agreement. This is what the Bangalore Tribunal analyzed. In the beginning, what they did was they quoted the definition of manpower recruitment or supply agency. They said very clearly, manpower recruitment or supply agency means any person engaged in providing any service, directly or indirectly, in any manner for recruitment or supply of manpower, temporarily or otherwise. This is the definition of manpower recruitment or supply agency, right? Now, the tribunal tried to break down this definition and understand each clause and its applicability in the given case. They said that the ingredient for classification within this particular nature of supply or service is that the supply should be provided by any person engaged in providing such services. That means it should be provided by an agency. That means it should be a specialized agency which is engaged in providing these services, right? And they said this foreign entity, which is Northern Trust, this foreign entity is not engaged in the business of providing manpower. It has a different business altogether. It is not in the business of deputing employees. Its core business is different altogether. That's why it cannot be said that this entity, foreign entity, is providing manpower supply services. This was the first argument which the tribunal took. Second, it said
that there should be two types of activity: manpower recruitment and manpower supply, right? So both the conditions should be satisfied. Both the manpower should be recruited and supplied. In the given case, even though manpower is being supplied, manpower is not being recruited by the foreign entity on behalf of the Indian entity. Please remember, manpower recruitment is when someone else recruits it on my behalf, right? So here they were saying that this would not be considered as a manpower recruitment supply. That's why manpower recruitment and manpower supply services would not be satisfied here, right? These are the two aspects which had to be remembered. Now, they said that these employees are actually working on full-time basis under Northern Operating System, right? So NOS, under Northern Operating System, these personnel are working as full-time employees only for the purpose of disbursement of salary, only for the purpose of this, only for the purpose of disbursement of salary, they are getting this amount from the foreign entity, which is irrelevant. Payment, how salary is being paid is irrelevant in the opinion of the tribunal. And since TDS is also deducted in India and PF is deducted in India by the Indian entity, also the Indian entity is remitting all social security benefits which are being paid to this foreign national outside India. So the Indian entity is paying for all these services also. They are reimbursing these services also. That's why it should not be considered as a manpower supply services. This is what was held by the tribunal. This is what the last status was with regard to this matter. That in their opinion, first of all, the entity, which is the foreign entity, was not having the core business of supply of manpower, right? Second, it was not providing manpower recruitment services. And even if salary is paid from outside India by the foreign entity, that is only for the purpose of disbursement. But it is the Indian entity which is bearing the burden of this amount, because the Indian entity is reimbursing the salary. They are also taking care of the Provident Fund TDS in India. Any social security benefit of this employee outside India is also reimbursed. That's why it should not be considered. That's why it should not be considered as a manpower recruitment or supply agency. This is what the last status was. We had a few other judgments from different tribunals, Mumbai Tribunal, Delhi Tribunal. The Mumbai Tribunal said if the global employees who are if they are deputed in India and if they are working as employees, they would be considered within employer-employee relationship. In the case of Volkswagen India Private Limited Tribunal, Mumbai, right? This is again a very landmark judgment which was there with regard to global employees. If they are working in India, employer-employee relationship would be established and there would not be any manpower recruitment supply in this case. Also, it held very clearly, which the Honorable Supreme Court has also accepted, that how the salary is being reimbursed or disbursed is not important, right? Also, in case of Computer Sciences Corporation India Private Limited, again it said, since the salary is being paid in India and tax is being deducted in India and it is also contributing towards social security benefits. Similar to the case that we had discussed, paid salaries in India means reimburse those salaries. Indian entities bearing that amount. And they are also contributing to social security benefits outside India also. That's why the Indian entity ideally would be having an employer-employee relationship. Whatever amount is reimbursed, that amount will not be liable to service tax. Other judgments were also there by Delhi Tribunal, Bangalore, which are mentioned here, Nissan Break, Honeywell Technology. Innumerable judgments had occurred on this. And most of these judgments had been positive judgments wherein they had said manpower recruitment supply would not be, or agency supplies would not be attracted simply because the employer-employee relationship is occurring and whatever amount is paid on secondment to employees
they would be considered as payment of salary and nothing else. This is what the status was before the Supreme Court decision had come in. So this, I hope by now we have understood the nature of the transaction which is occurring, as to how the transaction is occurring and what is the logic which we had from the point of view of the appellant, or from the point of view of the Indian entity, what was the argument which was taken in front of the tribunal. Now, the department went before the Honorable Supreme Court and they tried to defend their case by stating that this would be considered as manpower recruitment or supply service. So, the Honorable Supreme Court, what it did was, it tried to analyze the nature of the transaction, right? First, whether what is the nature of this transaction between the Indian entity and the foreign entity, right? At first, it understood that the Indian entity is providing back office support functions to the foreign entity. Fair enough. So there are a lot of back office functions which have opened in India for a number of MNCs. Now, these entities which are in India, they will consider their cost plus 15% markup on their expenditure. So here we are not talking about salary, but the overall expenditure, whatever is incurred in India for back office support function. Thereafter, they will bill to the foreign entity. This is the normal transaction. Now, to the foreign entity, these foreign is my voice audible? Hello? Yes, Hello? sir, आ रही है आवाज, बीच में चली गई थी, अब आ रही है आवाज आपकी. अच्छा, You're audible, sir. एक बार You're audible, sir. लास्ट सेंटेंस को दोबारा बोल दीजिए, वो नहीं सुन पाए थे लास्ट सेंटेंस जो अभी बोला ना इससे पहले. अच्छा, ठीक है. इसी स्लाइड में ना, इसकी पहली वाली स्लाइड तो पूरी क्लियर थी ना सर? हाँ, इसे पहले वाली पूरी थी. ठीक है, ग्रेट. So here the question is operational and functional control. What we are trying to discuss here is what is the nature of the transaction which is occurring between the foreign entity and the Indian entity. Now, the Indian entity is providing back office functions to the foreign entity. And for these back office functions, it is charging a markup of 15% on the cost, right? For providing these functions, since the Indian entity does not have those high-skilled managerial employees or technical employees, the employees are taken on loan. So this Apex Court used this word that the employees are temporarily loaned to the Indian entity. And the Indian entity would have control and they can terminate the agreement also. So the Indian entity would have entire control and they can terminate the agreement if required, or they can ask the employees to go back. So that means what they're trying to show is the Indian entity has the operational control, functional control over the employees here, which are being deputed, right? And they are only deputed for a specific assignment. They are deputed for a specific duration till the completion of that assignment. As soon as that assignment is complete, the employment in India, if that employment exists in India, it ceases. The employee goes back, right? So ideally, the employee is having a very limited duration, for a limited duration only the employee is working in India. Now, the letter of undertaking with the employees very clearly said that this is a temporary assignment, right? Now, the responsibility and supervision of the Indian entity is entirely there for the employees. So whatever work the employees are doing, even though they are for the foreign entity, doesn't matter. They may be working for the foreign entity, but all their tasks, all their assignments are the responsibility of the Indian entity. If there is any deficiency in the assignment or any deficiency in the deliverable, it is the responsibility of the Indian entity. It is not the responsibility of the foreign entity. So Indian entity is bearing the burden for it.
right? So Indian entity is separately providing some services for which it is bearing the burden. Now, the question came before the Honorable Apex Court whether this functional control, operational control, whether this is sufficient to establish employer-employee relationship. Can we say that if the entity has supervision and control over its employees, in that case it is having employer-employee relationship? Is the major question that we need to understand. See, we had a lot of favorable judgments earlier from different tribunals and even Supreme Court, wherein in the first case before ITAT Bangalore IDS software solution, it was said that if there are two different employments, one is a legal employee, whereas the other is having supervision and control. So legal employee is where the foreign entity is having that employment, because the foreign entity is actually having that payroll, has that employee under their payroll, whereas they are working directly under the instruction and direction of the Indian entity. So the ITAT Bangalore held that the real employer would be the latter, which is the person having supervision or control, which is the Indian entity. This was there in case of ITAT tribunal. In case of Ram Prasad versus CIT, again it was said that the test which is to be satisfied in terms of the employment is for supervisory control. As to what would be the supervisory control? Please remember here the supervisory control is again, so ideally it should be the Indian entity. Supreme Court in the case of Dharan Gadhara Chemicals Works Limited said very clearly in 1957 that supervision and control, what does it mean? What is the meaning of supervision and control? How do I say that I have supervision and control? If I am instructing not only my employee what to do something, if I'm instructing someone not only to do what to do something, but also how to do it, manner of doing it. I will instruct them that I want this done, and I also want this done in this manner. The execution also I would be supervising. That is supervision and control. So this is what was held with regard to employer-employee relationship, which has been held at numerous forums. But this has been a very disputable issue, whether supervision and control is sufficient to establish employer-employee relationship. If yes, it's very clear the foreign entity and Indian entity are not providing services. But if this is not a sufficient element, in that case, we have to see something else. The Honorable Apex Court, what they held. Now we're discussing what did the Apex Court hold. Now we're discussing about what the Apex Court ruling was. It said very clearly, control test is not determinable, is not only the test for determining who is the relevant employer. Test of control or manner of performance, that means supervision as to how this is being done, is not conclusive to decide if an employer-employee relationship exists. Again, this was another judgment of the Supreme Court. So there were different judgments at different times in different contexts. In the context of the current case, the Supreme Court, Honorable Supreme Court, held that control test is not the only test. Merely because the Indian entity has supervision or control, it cannot be said that employer-employee relationship is satisfied. If employer-employee relationship is not satisfied, in that case, it cannot be said what the Indian entity is paying is salary. Whatever reimbursement it is paying, it is not salary, it is service charge, right? For which service tax should be leviable. So here they said control test is not the only test. Then what should be taken? They took this judgment of Titagarh Paper Mills Company Limited, where they said, merely if you write something in the agreement, here what they had done was, the Indian entity had also entered into a separate employment agreement with the deputed employees. So what they said was, only what is written in the agreement that they are employees does not mean they would be constituted as employees.
all the terms and clauses of the agreement should be taken, not only one simple clause or not bits and parts. I cannot borrow the agreement. The entire agreement, the entire context of what is happening in the case, entire facts need to be taken into account for understanding. Merely because supervision and control is mentioned in the agreement, it cannot be said that there is an employee-employee relationship. This is what was held by the Honorable Supreme Court. Then they said, okay, fine. We were wanting to understand if supervision and control is not important, then what is the criteria based on which I can say that employer-employee relationship was existing or it was not existing? I mean, whether it or not it was existing, then what is the criteria based on which I can understand whether it is a contract of service or contract for service? Contract of service means I am working I am working as an employee. That is contract of service. Contract for service means I am providing services to the entity. That is a contract for service. Under which category should it be classified? What is the test that we should be satisfying? So these were the different tests which they said. First of all, they said we have to look at substance over form. Merely if it is written as employment agreement, it does not mean it is an employee, right? And we have to look at not one factor but multiple factors. There is no one single factor which we can say, okay, you can look at this factor so that employer-employee relationship is established. No, there are multiple factors. Let's look at the factors which the Honorable Court had taken in this particular case. First, if lien on employment, terms of employer retained by employee, a service PE can emerge. This was taken from Morgan Stanley, Supreme Court judgment, Director Income Tax. What is the meaning of this? The employee who is deputed from outside India, right? That employee still has a lien. That means they still have a right in terms of their original employment agreement with their overseas employer, which is the foreign entity. So they still have a lien. That means with their foreign entity, they still have the right to exercise whatever terms are mentioned over there. So the employment terms are still not changed. The employment terms still remain. That employment terms have not ceased. So they can still invoke the clauses of the original employment agreement, which is with the foreign entity. So they are essentially employees of the foreign entity, and here they are only working as only providing a service from the Indian entity is only providing a service to the foreign entity because the employment is technically originally with the foreign entity, because employment term, lien, or whatever clauses that they want to invoke, the employer has got the right to do that against the overseas. Yes, sir. So query बना ले फिर एक बार डिस्कस करें. I'm so sorry. I think there is some disturbance which came up because of one member. Please continue. Sure. Thank you. Now, what other criteria did the Honorable Apex Court see? First, they said that payroll disbursement. How is the payroll getting disbursed? They said that the Indian entity, though they are under the control of the employees are under the control of the Indian entity, still they are on the payrolls of the foreign entity. Also, it is not only a convenience, but it is a legal requirement that these employees that they should be receiving social security benefits in their home country. It cannot happen that these employees can simply move out of their country and terminate employment there and come here and be on the payroll of the Indian entity. It is not that simple in case of a temporary secondment, right? So they said that since they as part of the legal requirement, they have to be part of the foreign entity's payroll. So they are technically under the employment of the foreign entity. Next, whatever allowances are being paid to these employees, they are being paid in foreign currency. They were being paid in dollars. They were receiving these amounts in dollars. And whatever amount was being paid was also as per the global remuneration policy. It was not decided by the Indian entity.
these entities have their global policy that if these persons, let's say, are working outside India, outside their home country, they would be receiving this much of allowances extra from what they are receiving in their home country. So, and their base amount with their basic salary and their social benefits still remain the same as what was there in their home country, plus they are getting further allowances in outside their home country. So in other words, this is not a policy which is of the Indian entity, but of the foreign entity, and also they are receiving in foreign currency. So the entire transaction is occurring outside India, and the policy is also of the foreign entity, the employment policies of the foreign entity. That's why this would be considered as, he would be considered as an employee of the foreign entity. This was one of the arguments which they took. Second, these foreign entities have a pool of high-skilled employees. In order to cut what the Apex Court had said, the Apex Court had mentioned that these foreign entities are not in the business of providing employees. So here the Honorable Supreme Court said these foreign entities have a pool of high-skilled employees who have salary structure of the foreign entity, and as and when they are needed throughout the world, as and when they are required throughout the world, they are deployed to those pools. So what they are doing is, all these pool is created by the foreign entity and they are deployed throughout the world. So that means they are in the business of employing high-skilled employees so that throughout the world, wherever it is required, they can depute or second those employees. Because of this, they get some edge. Because of this, the Indian entity gets an edge, economic edge, because they are having these high-skilled employees, even though they are not in their permanent payroll, still they are able to take the benefits of these employees, of the skills of these employees. So these foreign entities are technically in the business of having high-skilled employees for this purpose only, for deputing them. That's why these employees, this would be still a manpower supply. Next argument which they took was that these employees are not deputed permanently. It is very clearly written in their agreement that this is only for a temporary purpose, only on an assignment, only for the duration when this assignment is completed. After this assignment is completed, they go back to their home country, or they also may get deputed somewhere else. So in other words, they are deputed only for a temporary purpose to perform those high-skilled tasks. Once they are done with those tasks, they go back to their home country, which is their country which is paying them the amount. That's why this is considered as a manpower recruitment supply. Also, again, a very important line which they mentioned, that this is clearly in relation to business of the foreign entity. So the tribunal had said this is not their business, but they are saying it is clearly in relation to their business, even though this may not be their core business, but it is still in their relation to their business. So whatever they are doing is a supply of service. They have mentioned that and marked this specifically, that this is a deployment in the relation of business of the foreign entity. This is very important. Based on all these tests, what the Honorable Court held was this would be considered as a employer-employee relationship with the foreign entity and not the Indian entity. So what the Indian entity is paying to the foreign entity technically is for services that has been provided by the foreign entity, right? Which is manpower recruitment supply. Also, here a few arguments had been taken, which the department, which the assessee had taken, which the department wanted to negate or the court wanted to negate. The argument was, can simply a reimbursement of salary be considered as consideration? The court said we need to look at it from two aspects. First, yes, there is remuneration. It is very clearly that whatever this is being paid is a reimbursement. It is nothing but salary. It is nothing but reimbursement of salary. There is no doubt upon this. They have accepted this very clearly. They are saying there is one more consideration that is being received, which is not clearly evident. The one more consideration which is being received, or one more consideration which is being provided in the form of, or one more benefit which is being received by the Indian entity, is by securing future assignments. Without these high-skilled employees,
they will not get any these kind of high-skilled assignments from the foreign entity. They will not get these assignments. So because they are getting these foreign employees in India, they are getting these assignments in India. As a result of which their revenue is increasing. So this is the implicit consideration which is also embedded within it, which is not clearly understood. But this is also a consideration, so it cannot be said merely reimbursement of salary is the consideration. Right? Next it was argued, this is revenue neutral. If I'm importing services, I would pay tax under RCM and I would simply take the credit of that amount. And if I take the credit of that amount, it is very simple that when I export these services, I would get a refund of this amount. This is technically a revenue neutral transaction. Once again, the Honorable Court held that whether or not you can get a refund of it is irrelevant. This may be a specific case that you may get a refund. But if the Parliament has chosen to recover taxes from you on import of services, you need to pay tax, irrespective of the fact that you can recover this or get this amount as refunded during import. That is immaterial. Since you are importing services, you have to pay tax. Also, in one line they mentioned very clearly, whatever was mentioned in Volkswagen Computer Sciences Corporation, other tribunal judgments, they were unreasoned and have no precedential value. So they have simply thwarted the judgments of the Delhi tribunal and the Mumbai tribunal. Both these judgments they have thwarted. Also, this judgment of Bangalore tribunal itself was overruled by the Supreme Court. Finally, I am not getting into details of this, but they had clearly mentioned that the department was trying to invoke the extended period of limitation. They said that this is merely non-payment of taxes. There is no willful misstatement, no suppression. The extended period will not be applicable. Fair enough, because this is a genuine legal dispute. This is not something wherein the assessee was trying to evade taxes. Right? So they said that extended period is not applicable. Now, after understanding what the Supreme Court has held, we need to understand what may be the implications of these transactions under the GST regime or even under the open issues of service tax regime. We are very clear now that if any employees are deputed from outside foreign entity to India on a secondment for a temporary time period, and if this amount is reimbursed as salary by the Indian entity to the foreign entity, it would be considered as manpower recruitment supply, for which the Indian entity has to pay taxes under RCM. This is what was held essentially by the Honorable Supreme Court. Now, this is the last aspect that I would want to discuss here. This is very important. What is the implication of this judgment today? Now, in cases where there is deputation by foreign entities, I think this judgment would apply even in case of GST. There is a clear deputement that these employees are working for a temporary time period in India and they are being paid salary in India and they are being paid salary by reimbursement to the foreign entity, right? For this, taxability, according to me, would also arise under the GST regime, in my view, given this judgment, right? Now, there is one more aspect which is very common, which is cost sharing. Now, a lot of group companies together, what they do is they share cost of employees. What they do is there is an agreement which is usually entered for, let's say, that if there is 100 rupee which is to be paid, 70% would be borne by entity A and 30% would be borne by entity B. Both of these entities are related entities. They would be having a cost sharing agreement, right? For convenience purposes, entity A may be paying 100% and recovering balance 30% from the entity B. Whether this cost sharing would also be eligible to GST or service tax. To my view, the structuring of the agreement is extremely important. In the agreement, it should be clearly mentioned that this is nothing, that there is no profit element. This is merely a cost sharing agreement. No person is providing service to the other. The employee is essentially working on partial basis
for the entity A and entity B for which the cost is being shared. This is nothing but a joint employment between the two entities, right? This is nothing but a joint employment between the two entities. An employee can be working for two entities together. This cost is being shared, it is merely reimbursement. It is not that one employee is working exclusively for one entity. Then an employee may be working together for multiple entities. They may be deriving salaries from multiple entities. So merely sharing of cost, where there is no profit element, there is no provision of service, merely one entity is bearing one part of the cost, the other entity is bearing other part of the cost. According to me, it will not involve any tax under GST or service. In Gujarat State Fertilizers and Chemicals Limited, also the Honorable Supreme Court had held this test that this is merely a sharing of cost. There is no profit element involved. This is merely a case where two persons are working together or they are sharing costs together for certain expense. In that case, no tax can be levied on this, right? Employee deputation to branches. Till now, we have been talking about two entities, entity A, entity B. Now, think about employees working for two different branches. In India, let's say, we are not wanting to make it very difficult, but let's say I am an employee who is deputed at Kolkata branch. I am now required to work on a deputation basis for the Delhi branch. Now, if I'm working temporarily for the Delhi branch, do you think for this temporary time period, the entity in Kolkata, the branch in Kolkata would have to charge to the entity which is in Delhi? Do you think that's possible? To my view, this judgment would not be applicable to branches, in my view. That's my humble view. Why? Because an employee is an employee of the entity. They are not employee of branch. I am sorry, but I differ with Columbia Asia Advanced Schooling. I'm not getting into that. But in my view, employee is an employee of the entity. So if an employee is working for two different branches, they are still working for the same entity. Employer-employee relationship is not between branches and the employee, it is between the entity and the employee. That's why if there are any taxes, there is any deputation for the employee, according to me, no charge is to be made from Kolkata branch to the Delhi branch for deputation of employees to branches, not entities. Next, existence of cross-charge. Now, in the judgment itself, the Apex Court had held whether there is a taxability on cross-charge or not is a major aspect that we need to examine. Now, by the end, they had established clearly that yes, cross-charge may exist. Cross-charge is a concept which does exist under service tax or GST. Whether or not cross-charge is applicable in this situation, we are not getting into that, but cross-charge does exist, right? If employees are working for two different entities and there is a reimbursement, yes, there is a cross-charge. If one entity is providing services on behalf of the other entity, yes, there is cross-charge. Employee working for branches, in my view, there is no cross-charge. Right? So, cross-charge is essentially a concept which may exist under GST also. On different concepts, on different kind of transactions, cross-charge may exist. But since it is not the scope of discussion today, I'm not getting into it because it's a huge area, right? Next, last but not the least, in course of furtherance of business. Normally, in what we try to establish under the GST law also, that if the foreign entity is providing services to the Indian entity in the form of providing manpower, it is not in the course of furtherance of business of the foreign entity. That's why, because their business may be entirely different. So if they're deputing employees, that is not their essential business. So it would not be liable to tax. This is one of the arguments which we take for justifying employee deputation under GST or where we see Section 7 coming into place for supply. But here they have mentioned clearly, employee deputation for the foreign entity is still in relation to their business. So this argument that it is not in course of furtherance of business may not
be a very strong argument to say for that this foreign entity is not having this business of deploying employees. So that argument may not hold that good, right? So these are the different implications which may arise after this Northern Operating System judgment. Though it is there under the service tax regime, I'm sure it would be quoted under multiple case laws in future under GST also. And this is truly a landmark judgment, and I'm sure a lot of things have now got settled after this. Obviously, there have been a few unanswered questions which are still there. Not to say that everything has been answered, but there are quite a few aspects which have been settled after this judgment. With this, I would like to thank each and every one of you for giving me a very patient hearing. I now hand over to the organizer for the course. Thank you, thank you, CA सोम खेतान जी. आपने बड़ा ही इलेबोरेट डिस्कशन किया ऑन सेकंडमेंट ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर और बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद भी इसको डिस्टिंग्विश किया गया और पावर सप्लाई के अंदर इसको लाया गया, मैन पावर सप्लाई के अंदर लाया गया और क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए और कैसे इसको हेल्ड किया गया और कैसे डिस्टिंग्विश किया गया. आपने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझा दिया है. और इस तरह की कोई क्वेरी हो तो ले लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर, नहीं तो फिर आगे चलते हैं सेकेंड असाइनमेंट के ऊपर. कोई क्वेरी है इस पॉइंट पर, कोई डिस्कशन किसी का? If any member has any query, please unmute yourself and please ask the question. See, the pertinent question जो शुभम जी दो चीजों का रहता है, रिवर्स चार्ज एक अलग बात है, but the admissibility of secondments has become a big challenge. There has been a landmark judgment of Honorable Supreme Court in the case of Ili Lilly. That's also the name of the company. वो income tax के perspective से था secondment के ऊपर. Now, with this particular judgment, I think income tax and GST, not service tax today, but GST. In our country, there has to be some aligning between the two. We are struggling, our corporates are struggling on the fact that income tax authorities or GST authorities के बीच में एक single uniform positions एक aspect पे नहीं होती. So I think that one thing still remains a point of debate. So if members don't have question, can we move on to the second topic for the day? And Shubham bhai, I would request if you can be there, though keep your video and your audio off as you like, because I understand your time is precious. But we will take up some queries at the end. I'll take this forward and please share your PPT for circulation in members, if possible. Definitely, I'll do that. And thank you so much for this opportunity. I'm sure this was a great learning experience for me also. Very nice. We are glad to have you here with us, sir. Thank you, Shubham ji. Thank you, Shubham ji. अब मैं इनवाइट करूंगा सीए मनोज कुमार जी को फॉर द नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 194, जिसको सप्लीमेंट करेंगे अपने जसपाल सिंह सेठी जी भी. इस टॉपिक को समझते हैं मनोज जी के द्वारा. मनोज जी प्लीज. थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सुभाष जी एंड फ्रेंड्स. Yesterday was a CA day, you all know. हमने सेलिब्रेट भी किया. डॉक्टर्स डे भी था, वो भी सेलिब्रेट किया. शाम को किसी ने पोस्ट किया कि आज तो जीएसटी डे भी है, हमने वो भी सेलिब्रेट किया. फिर रात को याद है आज तो 194R डे भी है, क्योंकि आज से ही वो एप्लीकेबल है, तो वो भी हमने सेलिब्रेट किया. तो कल 4 विशेष इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हमारी लाइफ के अंदर, और चारों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और 194R तो प्रोफेशनल के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है कि इट्स गोइंग टू बी बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसके अंदर सवाल ज़्यादा हैं और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आंसर कम है, और आंसर किसी को नहीं मालूम. बिग लिटिगेशन इसके अंदर होने वाला है. इनफैक्ट जिस सोर्स जो इस 194R का था, सेक्शन 28(4), वो हम लोग समझते भी थे, हमें मालूम ही था कि बेनिफिट क्या है, परक्यूजिट क्या है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. ये 194R लेके आए, उसने हम लोग को डाइवर्ट किया थोड़ा. 128(4) से थोड़ा डाइवर्सन था, हमने पचा लिया. लेकिन जब ये सर्कुलर लेके आए, जिसको इन्होंने गाइडलाइंस का नाम दिया, तो हमारे को समझ में नहीं आया कि गाइडलाइन के बेनिफिट क्या होता है, परक्यूजिट क्या होता है. फ्रेंकली स्पीकिंग, आफ्टर
seeing the circular and guidelines issued by the Institute of by the board CBDT, मैं ये भूल गया कि यार मीनिंग ऑफ बेनिफिट्स क्या है एंड मीनिंग ऑफ प्रिक्विजिट क्या है और गाइडलाइंस किसे कहते हैं, क्योंकि ये जो सर्कुलर आया दैट वाज फॉर रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी कैसे कहते हैं और ओपिनियन किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या होती है जिस पर्पस के लिए सर्कुलर आया, वो सब हाथ से निकल गए। तो अब हम जो मैंने स्ट्रक्चर किया अपनी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो पहले तो हम सेक्शन को देखेंगे, जो सेक्शन सोर्स है इसका, फिर हम 194R को समझेंगे वो कहना क्या चाहता है, फिर हम जो सर्कुलर इशू हुआ जो कि गाइडलाइंस अंडर 194R, तो गाइडलाइंस 1 से लेके 10 तक, उसमें उनके क्वेश्चंस क्या थे, उन्होंने आंसर क्या दिए और हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, फिर हम मिसलेनियस इशू कवर करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों के पास बहुत सारी क्वेरीज होंगी इसको लेके। कोशिश ये है कि मेरी जो गौरव भाई से डिस्कस हुआ था कि देयर में बी सर्टेन क्वेरी व्हिच वी आंसर इमीडिएटली, व्हिच एंड सर्टेन मे नॉट बी इमीडिएटली आंसर्ड। शायद हमें भी नहीं मालूम कईयों के आंसर तो एज ऑन टुडे कि बेनिफिट है या प्रिक्विजिट नहीं भी है। जैसे कि लोन वेवर हो गया, ये बेनिफिट है या नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया बाय होल्डिंग टू सब्सिडी कंपनी, वो बेनिफिट है या नहीं है। जब हमने टिपिकली कुछ लोगों से इन पर डिस्कस करना चाहा तो बोले हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इट मींस दे आल्सो नीड द टाइम टू अंडरस्टैंड कि बेनिफिट है या नहीं। और जब इस सर्कुलर को हमने पढ़ा तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठे जिसके आंसर हमें भी नहीं मिल रहे अभी कि यार ये कहाँ लेके जा रहे चीजों को। तो एक ये नेसेंट स्टेज पे है सर्कुलर, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सर मुझे परमिशन दीजिए जरा अपनी स्क्रीन शेयर करने की इसके साथ। जसपाल भाई अपनी स्क्रीन तो ऑन रखो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा तो अच्छा लगेगा। 2-3 जने तो ऑन रहे, तो ऐसा लग ऑन कर लो भाई, ऑफ म्यूट हो अनम्यूट कर लो। सर मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं करना चाहता था, आपके साथ हूँ। 2-3 जने हो ना बोलने के लिए तो मजा आता है, वो अदरवाइज लगता है हम बोल किसको रहे हो। नहीं सर मैं आपके साथ हूँ। वैक्यूम क्रिएट हो गया। Manoj ji, पहले everybody is wanting to listen to you before they flush out all the questions to you. नहीं सर मैं क्वेश्चंस ना, जसपाल जी and yourself will be having a tough time today अगर 194R में वाकई दम है। बहुत दम है, आप देखो तो सही। सर सोर्स क्या है 194R का? 194R कहता है कि टीडीएस काटोगे जो बेनिफिट और प्रिक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है। इसका सोर्स है सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 जो प्रोवाइड करता है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रिक्विजिट whether convertible into money or not arising from the business or the exercise of a profession। मीन्स कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और उसके दौरान उसे कोई बेनिफिट या प्रिक्विजिट मिलता है तो उसकी इनकम माना जाएगा। लाइक टारगेट कि किसी बिजनेसमैन को टारगेट दिया कि यदि आप इतना क्वांटम मेरा माल बिकवाओगे तो आपको कार गिफ्ट करूंगा, तो वो जो कार है उसके यहाँ पे बेनिफिट है एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द इनकम। यहाँ में कोई दिक्कत भी नहीं है, समझ में भी आता है। तो क्या रहा था कि ये अनडिक्लेयर था, जिसको भी बेनिफिट मिल रहा था, गाड़ी मिल रही थी, फ्रिज मिल रहे थे, मोबाइल फोन मिल रहे थे, वो अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं कर रहा था। तो उन लोगों को ट्रैप करने के लिए द सेक्शन 194R इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें यह कहा गया कि जो पर्सन बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, प्रिक्विजिट प्रोवाइड कर रहा है, वो 10% टीडीएस काटेगा बिफोर प्रोवाइडिंग बेनिफिट और प्रिक्विजिट। पहले हम इसकी जो सेक्शन की लैंग्वेज है उसको स्टडी करते हैं, कहता क्या है। एनी पर्सन, ये सेक्शन में 3 सब सेक्शंस हैं, 3 सब सेक्शंस हैं, 3 प्रोविजन है, 1 एक्सप्लेनेशन है। इट्स अ कंप्लीट सेक्शन इटसेल्फ, पूरा एक्ट आ गया इसके अंदर। ये कहता है क्या 194R1 एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू रेजिडेंट, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू रेजिडेंट, रेजिडेंट को प्रोवाइड करने के लिए एनी बेनिफिट और प्रिक्विजिट whether convertible into money or not। हम यहाँ रुक जाते हैं। What is mean by any person responsible for providing to resident? वो इसके उन्होंने एक्सप्लेनेशन के द्वारा डिफाइन किया, जो कि बेनिफिट और प्रिक्विजिट प्रोवाइड कर रहा हो, that is the person responsible for providing to resident।
फिर उन्होंने कहा एनी बेनिफिट ऑफ एक्यूजेंट, एनी बेनिफिट ऑफ एक्यूजेंट कहीं पे डिफाइन नहीं किया, ना तो उन्होंने सर्कुलर में किया ना एक्ट में किया। इट्स एन ओपन एंडेड बॉक्स है जिसमें जो चाहे फिट कर सकते हो आप। व्हाट कैन बी और व्हाट कैन नॉट बी वी शैल डिस्कस। whether convertible into money or not. It's one of the most important phrase over here. Whether convertible into money or not. मैं से 3 बार पढ़ रहा हूँ whether convertible into money or not, क्योंकि हम बार-बार पढ़ेंगे आगे भी। भाई जो चीज convertible हो सकती है मनी में या नहीं हो सकती। Benefit of perquisite, whether convertible into money or not. ये benefit of perquisite के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो इट मीन इट मस्ट मीन काइंड। महिंद्रा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा ये काइंड में होगा, देन ओनली इट विल बी एप्लीकेबल। कैश में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन बाय सच रेजिडेंट, ये जो रेजिडेंट है रिसिपिएंट है, और बिजनेस प्रोफेशन जो है वो रेजिडेंट रिसिपिएंट बिजनेस का है। मीन्स कि हमें सेक्शन को एप्लीकेबिलिटी देखनी है बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन बाय द को रिसिपिएंट, नॉट को प्रोवाइडर। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं कोई बिजनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ उस दौरान मुझे कोई बेनिफिट मिलता है, देन आई एम कवर्ड, अदरवाइज नॉट। सेल बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और perquisite as the case may be to such resident. Now any person before providing such benefit or perquisite to such resident, मतलब बिफोर प्रोवाइडिंग यानी कि बेनिफिट और perquisite देने से पहले इंश्योर करेगा that tax has been deducted in respect of such benefit or perquisite at the rate of 10% of the value or aggregate of the value of such benefit or perquisite. वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू क्या हुआ कि या तो आप लमसम में 10-20 लमसम में अमाउंट दो या थोड़ा थोड़ा करके दो, तो दोनों ही पार्ट कवर होंगे। ये नहीं कि मैंने 2,000 रुपए दिए हैं, लिमिट 20,000 है, मैं तो कवर ही नहीं। नो, वो टोटल एग्रीगेट को अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 10% पर टीडीएस लाया गया। 194R की जो स्पेसिफिक इंटेंशन थी वो थी टू ट्रैक द ट्रांजेक्शंस, नॉट टू कलेक्ट द टीडीएस। आई थिंक सो। और उसको 10% रेट रखना है, क्वाइट ऑन द हायर साइड। इट कुड बी 2%, इट कुड बी 1%। कई बिजनेस के 10% प्रॉफिट नहीं होता, 10% टीडीएस इन्होंने रख दिया, व्हिच इज क्वाइट ऑन द हायर साइड, व्हिच कुड हैव बीन अवॉइडेड। फर्दर सब 3 प्रोविजन हुए। पहला प्रोविजन क्या था, पहले हमने सेक्शन में पढ़ा कि पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है परक्यूजिट और बेनिफिट देने के लिए इन काइंड, वो परक्यूजिट और बेनिफिट देने से पहले 10% टीडीएस काटेगा। किसका? जिसने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहले प्रोविजन में कहा गया। अब ये प्रोविजन को भी इंटरेस्टिंग है, ये सेक्शन को ओवररूल कर रहा है, सब सेक्शन को। वो हम देखें कैसे ओवररूल कर रहा है। In a case where the benefit of perquisite, as the case may be, is wholly in kind or partly in cash and partly in kind, but such part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of the whole of such benefit of perquisite, the person responsible for providing such benefit of perquisite shall, before releasing the benefit of perquisite, ensure that the tax required to be deducted has been paid in respect of such benefit of perquisite. इन्होंने ये कहा कि बेनिफिट परक्यूजिट चाहे काइंड में है, चाहे पार्टली काइंड और पार्टली कैश में है, और जो कैश का कंपोनेंट है वो इतना नहीं है कि आप उसे टीडीएस जमा करा सको, तो बिफोर गिविंग द बेनिफिट, बिफोर गिविंग द परक्यूजिट, जो प्रोवाइडर है वो इंश्योर करेगा कि इसके ऊपर जो टीडीएस है वो जमा हो जाए, पेड हो जाए। अब इन्होंने कहा where the benefit of perquisite is in whole in kind, partly in cash and partly in kind. सबसेक्शन 1 क्या कहता है? whether convertible into money or not, वो प्योरली काइंड की बात कर रहा है। प्रोविजो काइंड एंड कैश की बात कर रहा है। नाउ some people say it's an expansion of the means. Proviso is expanding the main section. I am saying he is not expanding, he is overruling. एक्सपेंड तब होता है जब सेक्शन कहता है ए बी सी, प्रोविजो कहता है डी। प्रोविजो में एक्सपेंड, मैं ये नहीं कहता एक्सपेंड नहीं कर सकता, दे आर जजमेंट, बट प्रोविजो कैन नॉट ओवररूल द मेन सेक्शन। नाउ इज ओवररूलिंग, दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। सो दैट
So that's what I say कि जब ये सेक्शन 194 आया, it is going beyond main section 28(4) जिसको ये हिट करने के लिए आया, जो काइंड की बात करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने महिंद्रा में कहा इट्स अ काइंड ओनली। तो यहाँ पे इट्स ओवररूलिंग द मेन सेक्शन। सेकंड प्रोविजन ऐड हुआ, उसने ये कहा कि यदि जो वैल्यू है गिफ्ट की, एग्रीगेट वैल्यू है गिफ्ट की और बेनिफिट की वो 20,000 तक है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। फेयर पॉइंट। थर्ड प्रोविजन ने कहा यदि इंडिविजुअल्स और एचयूएफ हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं और 1 करोड़ से कम टर्नओवर है उनकी, या प्रोफेशन कर रहे हैं और टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो उस केस के अंदर आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है इंडिविजुअल एचयूएफ की। यदि मुझे करंट ईयर में टीडीएस काटना है तो पिछले साल में देखूंगा कि मेरी जो टर्नओवर है 1 करोड़ से कम है बिजनेस की, 50 लाख से प्रोफेशन कम है ज्यादा है। दिस इज द थर्ड प्रोविजन। नाउ सेक्शन सेकंड सेक्शन ने कहा यदि इफ एनी डिफिकल्टी अराइजिंग इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द बोर्ड मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। डिफिकल्टी आती है इम्प्लीमेंटेशन पे, जब आप किस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। हाउ कैन यू एंटिसिपेट कि मुझे डिफिकल्टी आने वाली है, मेरा सर्कुलर 1 जुलाई, मेरे पास ये 194 इफेक्टिव होगा 1 जुलाई से, आपने 16 जून को सर्कुलर निकाल दिया, कह दिया कि ये डिफिकल्टी आपको आने वाली है और ये सब चीजें, और फिर आप अभी हम स्टडी करेंगे कि वो आप डिफिकल्टी को रिमूव कर रहे हो या फिर आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो, आप लेजिस्लेट कर रहे हो, एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन कर रहे हो। दैट्स वी शैल स्टडी व्हेन वी शैल स्टडी सर्कुलर। फिर उन्होंने कहा सबसेक्शन 3 के थ्रू every guidance issued by the board under subsection 2 shall, as soon as may be after it is issued, be laid before each house of parliament and shall be binding on the income tax authorities and on the person providing any such benefit or purchase। Mind here कि ये जो गाइडेंस इन्होंने इशू की है बाइंडिंग ऑन द एसएससी आल्सो। पहले जो सर्कुलर इशू होते थे 119 के अंदर वो सिर्फ डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग थे, ना कि एसएससी पे। बट जो गाइडलाइंस इश्यू होंगी अंडर 194(2) वो जो है बाइंडिंग होगी एसएससी पे भी। तो इसमें कोर्ट का क्या रोल रहेगा? क्या इस नोटे थ्रू दिस सबसेक्शन द कोर्ट जुरिडिक्शन टू इंटरप्रेट द लॉ इज बीइंग स्नैच्ड अवे? इसको हमें समझना होगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ is an exclusive jurisdiction of the court and nobody can enter into it. तो इसको भी हम समझेंगे। Explanation for the purpose of this section: the expression person responsible for providing means the person providing such benefit or purchase it, or in the case of a company, the company itself, including the principal officer thereof. तो जो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो person provide करे, that is the benefit or purchase it, that is the person responsible for providing। हम सर्कुलर पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे पहले सर्कुलर का क्वेश्चन क्या है, उन्होंने क्या आंसर दिया और हम उसमें क्या सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज इट नेसेसरी दैट पर्सन प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ परक्यूज इट नीड टू चेक if the amount is taxable under clause 4 of section 28 of the act before deducting tax under section 194(r) of the act? उन्होंने कहा कि हमें टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 28(4) देखनी है या नहीं देखनी है बिफोर डिडक्टिंग टैक्स अंडर 194(r)। उन्होंने कहा नहीं, आपको 28(4) तक आप कन्फाइन नहीं हो, आप 41(1) को भी देखोगे कि वहां तो टैक्सेबल नहीं है। आप ये भी उन्होंने कहा 195 के अंदर ये लिख रखा है कि आप चार्जेबिलिटी देखोगे, और किसी सेक्शन में लिखा है कि आप चार्जेबिलिटी देखोगे। इट मींस आपको टीडीएस काटना चाहे वो चार्जेबिलिटी टैक्स है या नहीं है वो फिगर। उन्होंने कोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट का पिलकॉम का जजमेंट वेस्ट बंगाल का, जिसमें कहा था आपको टैक्सेबिलिटी नहीं देखना। हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है? पहले तो एक बेसिक फंडामेंटल रूल है जो सेक्शन 4 जो चार्जिंग सेक्शन से निकलता है कि टीडीएस आप उसी चीज का काटोगे जो कि टैक्सेबल है अंडर 4(1). 4(2) क्या आता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 4(1),
income tax shall be deducted at the source or paid in advance where it is so deductible or payable under any provision of this act. Means के in respect of income chargeable under subsection 4(1), और 4(1) में जो income chargeable उसी पे TDS काट हो गई, यानी कि 194R में जो आप सर्कुलर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 डाल रहे हो और कह रहे हो आप चार्जेबिलिटी नहीं देखोगे, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहे हो, वो कॉन्ट्रेरी है लॉ के सेक्शन 4(1) के। सेकंड, सेक्शन 190 चैप्टर 17 जिसके अंदर ये सेक्शन 194 इंट्रोड्यूस हुआ, गवर्निंग सेक्शन है। वो गवर्निंग सेक्शन से सारे सेक्शन बाइंडिंग्स हैं। वो क्या कहता है, ignoring that the regular assessment in respect of any income is to be made at a later assessment year, that tax on such income shall be payable by deduction of collection at source. यानी कि regular assessment in respect of any income, tax on the income, तो 190 जो गवर्निंग सेक्शन ऑफ इनकम की बात करता है, जब तक कोई इनकम नहीं तब तक आप टीडीएस नहीं काट सकते। थर्ड, टैक्सेबिलिटी वर्सेस चार्जेबिलिटी। प्रीकॉम के अंदर जो इश्यू था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो टैक्सेबिलिटी का था, चार्जेबिलिटी का नहीं था। मैं चार्जेबिलिटी देखूंगा, टैक्सेबिलिटी का मान तो नहीं देखूंगा। 194C में एसोसिएट इंजीनियर में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वी आर एक्सेप्ट दिस, वी आर नॉट टू सी द टैक्सेबिलिटी बट वी हैव टू सी द चार्जेबिलिटी। यदि कोई इनकम चार्जेबल ही नहीं है, I am not supposed to take the TDS on it. It's beyond the boundary of the law. Fourth, जो indirect tax की practice करते, they must be well aware of the judgment of Bhavani Cotton Mills. बिल्कुल 2-member judgment है, Bhavani Cotton Mills 5-member judgment है, जो कहता है contingent collection of tax is not permissible where sales and purchases are not taxable at all. सेल एंड परचेज टैक्सेबल नहीं है तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज ओवर हियर, अप्लाई होगा। जीसी चट्टा राइस म्युनिसिपैलिटी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि देयर आर 3 स्टेजेस इन टैक्स प्रोसेस। फर्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी, कि देयर शुड बी प्रोविजन फॉर प्रोविजनल लायबिलिटी, चार्जिंग सेक्शन 4 होना चाहिए। देन असेसमेंट, कि डिटरमिनेशन ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड, एंड देन देयर शुड बी मेथड क्या टीसीएस, टीडीएस, एडवांस टैक्स। यहाँ पर कर रहे हैं, हमें चार्जेबिलिटी नहीं देखनी, हमें ये नहीं देखना क्या अपना इनकम में टैक्स बनता है नहीं बनता, हमें सीधा टीडीएस काट लेना है। भाई कौन सा लोग पढ़ा रहे हो आप हमें? सन्यासी राव का जजमेंट है बहुत फेमस, आर्टिकल 265, नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ आपके पास नहीं है, चार्जेबिलिटी नहीं है, तो आप कैसे टैक्स कलेक्ट कर लोगे? तो यू आर लेजिस्लेटिंग, सर्कुलर 1 इज legislating a new thing which is not there in the act. The delegated authority are going beyond the power they are infringed. अब मैं एक चीज पे वापस आना चाहूंगा, it may be taxable under section 41(1). देखो अब मैं यहाँ जो बातें करूंगा 2 विंडो से बात करूंगा, लीगलिटी एंड कंप्लायंस। तो जब तक लीगलिटी चैलेंज नहीं होती, जब तक सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से स्टेप डाउन नहीं करता, हमें कंप्लायंस भी करनी है। तो नेचुरली अब चाहे 41(1) क्या है, चाहे 28(4) का टीडीएस तो काटना पड़ेगा। 41(1) का क्या मतलब है? हम कल शाम को पूरे टाइम इसी 41(1) को समझते रहे और कोशिश करते रहे कैसे कवर हो रहे हैं। तो जो मुझे समझ में आया और मेरे दोस्तों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम बेडर्स पे तो टीडीएस की बात नहीं कर रहे, कि जो बंदा मैंने किसी से माल खरीद, किसको माल बेचा, मुझे पता लगा कि उससे पैसे रिकवर नहीं होंगे, मैंने बेडर्स डाल दिया। अब मैं तो यहाँ बैडर्स क्लेम करके अपना खर्चा क्लेम कर लेता हूँ, सामने वाला अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करता। तो 194R की क्या टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाली गई है कि मैं बैडर्स पे टीडीएस काटूं, मैं एक्स्ट्रा लॉस में बियर करूं, मुझे पहले पैसा नहीं मिला और ये भी ना मिले, क्योंकि वह रिमिशन ऑफ लायबिलिटी और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी की बात हो रही है। प्लीज चेक इट। मुझे ऐसा लगता है पढ़ने पे कि ये कहीं ना कहीं इसको हिट कर रहा है 41(1), और यदि ऐसा है तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। आगे मैं आपके सामने रखूंगा कि जो उसका मेमोरेंडम आया था, मेमोरेंडम में लिखा था सेक्शन 28(4) को ओमिट कर रहे हैं, अभी कह रहे हो 41(1) की बात भी कर रहे हैं। इट मींस द एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिंग, ये एक सेटल लॉ है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट,
कि जब किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करोगे तो लेजिस्लेटिव इंटेंट देखोगे। लेजिस्लेटिव इंटेंट क्लियर है कि दे आर मेमोरेंडम के अंदर 28(4) की बात हो रही है। यहाँ पे 40 की बात कर रहे हो, नॉन टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हो, नॉन चार्जेबिलिटी की बात कर रहे हो, which is beyond. For that there are certain judgments of the Honorable Supreme Court. और आपके जीएसटी में तो मोहित मिले से काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट आया जहाँ पे लेजिस्लेटिव हिस्ट्री की बात की गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Is it necessary that the benefit of perquisite must be in kind for section 194R of the Act to operate? अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने जो आंसर दिया वो स्टेट लेजिस्लेशन इन्होंने कर दिया, मतलब जो 184R में नहीं है वो भी इन्होंने यहाँ कवर कर लिया। वही कहते हैं नो, काइंड में वो जरूरी नहीं है। सेक्शन 194R of the Act clearly brings its scope a situation where the benefit of perquisite is in cash, in kind, or partly in cash or partly in kind. मतलब आपको यहाँ पे 3 सिचुएशन उन्होंने इसकी बात भी कर दी और तीसरी एक लिया है, यानी कि कैश की सिचुएशन भी लिया है वो, कैश काइंड, पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश। तो ये जो कैश हो गया, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन जो 194R में नहीं है। 194 भी बात कर रहा है दो सिचुएशन, काइंड, पार्टली इन काइंड, पार्टली इन कैश, लेकिन ये कह रहा है कैश में भी कवर कर लेंगे हम, यानी दे आर गोइंग बियॉन्ड द सेक्शन 194R एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन, नॉट परमिसिबल। महिंद्रा में इसकी बात हुई, मेरे जो ऑब्जर्वेशंस है, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोविजो फॉर 3180 और 1 पढ़ना चाहिए हर एक को, जब बहुत ही ब्यूटीफुली 3 मेंबर बैंक ने डिफाइन किया है। और यदि हम इस तरह पढ़ेंगे इसको कि कैश भी कवर है, काइंड भी कवर है, तो वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, तो सुपरफ्लुअस हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं थी लिखने की। व्हाट इज द नीड ऑफ इट? तो दिस इज नॉट अ गाइडलाइन टू रिमूव द डिफिकल्टी, दिस इज द एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन। Question number 3. Is there any requirement to deduct TDS under section 194 of the Act when the benefit of perquisite is in the form of a capital assets? यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट आपको कार के रूप में मिलता है, लैंड के रूप में मिलता है, तो इट्स ओके, से बेनिफिट परक्यूजिट कवर है। और उन्होंने कुछ जजमेंट को रिलाइज पे की है, वो जजमेंट सही है गलत है, आई एम नॉट ऑन दैट पार्ट, बट इट्स ओके विद मी कि अगर बेनिफिट परक्यूजिट कैपिटल एसेट्स के रूप में भी है, बट कैपिटल एसेट की बात हो रही है, कैपिटल रिसिप्ट की बात नहीं हो रही। रिमेंबर माय फ्रेंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एसेट्स। यदि मेरा कोई टर्म लोन है और वो टर्म लोन वेव हो रहा है, तो कैपिटल एसेट्स नहीं हो, कैपिटल रिसिप्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 28(4) में कवर नहीं है। तो रिमेंबर द डिफरेंस, कैपिटल एसेट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 4. Whether sales discount, cash discount and rebates are benefits of perquisite? क्या बेनिफिट्स है, परक्यूजिट नहीं है। ये कहते हैं सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट allowed to customers from the listed retail price represents larger realization of the sale price itself. Similarly, there could be quantity discount. संदीप जी क्वेश्चन बाद में लेंगे क्योंकि अभी पूरी प्रेजेंटेशन कवर कर लें, अगर क्वेश्चन ह्यूज है इसके अंदर। मेरी गौरव जी से बात हुई थी, इसके लिए अलग से समझा रखिए क्वेश्चन आंसर का, सिर्फ आज समझ लो कंसेप्ट को। I agree with Manoj ji. I request everyone कि एक बार पहले ये थोड़ा सा we'll try to conclude 194R and then we will take up the questions as the time permit, because I don't know, but this week has been very happening. 47 GST Council meeting, a lot of changes have come up. So we are hoping कि आज हम जितना maximum cover करें, but we will keep it in continuation some other time also. Sandeep ji, if you think fine, you can post the question in the chat box. Yes, we shall keep it. And if time permits, we'll take it. आप जितने क्वेश्चन चाहे भेज दीजिए स्टार ग्रुप के अंदर, हम सबको रख लेंगे, नोट कर लेंगे, और बाद में 100% एड्रेस किए जाएंगे क्वेश्चन आप लोगों के। That is a very valid idea from Manoj ji and Jaspal ji. स्टार व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर लीजिए एंड वहां पे भी रिप्लाई होगा, और अगर आज यहाँ पर हुआ तो यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन आंसर होगा। Sales discount, cash discount, rebate allowed to customers from the listed retail price represent larger realization of the sale price itself. Similarly, there could be quantity discount like 2 items free with 10 items. Logically,
There are also benefits, though related to sales and purchase. However, it would put sellers to difficulty. To remove such difficulty, it is clarified that no tax is required to be deducted under Section 194R of the Acts on sales discount, cash discount, and rebate allowed to the customers or quantity discount. तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा, वैसे तो ये कोई बेनिफिट नहीं है. बेनिफिट ये इसलिए नहीं है कि ये बिजनेस टर्म्स हैं. मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, बार्गेन करता हूँ, बार्गेनिंग टर्म पे कोई परचेज कर लेता हूँ. इट्स नॉट अ बेनिफिट प्रोक्यूज टू मी. It's a business transactions. Now they are redefining the business transactions. So it's not a perquisite, but उन्होंने कहा इसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. बट फर्दर वो क्या कहते हैं कि यदि ये फ्री सैंपल से रुपए आपको दिए जाते हैं तो आपको टीडीएस काटने कैसे? आपको इंसेंटिव मिला इन द फॉर्म ऑफ कैश, काइंड सच एज कार, टीवी, कंप्यूटर्स, गोल्ड कॉइन्स, मोबाइल फोन एटसेट्रा. या आपको किसी ने स्पॉन्सर किया, ट्रिप को स्पॉन्सर कर दिया तो आपको टीडीएस काटना है. या आपको कोई फ्री टिकट दे दे किसी इवेंट की तो टीडीएस काटना है. या आपको फ्री मेडिकल सैंपल मिलेंगे तो टीडीएस काटना है. अब दो सिचुएशन उन्होंने दी. पहली सिचुएशन दी सेल्स की, डिस्काउंट की, रिबेट की और क्वांटिटी डिस्काउंट की. सेकंड सिचुएशन थी फ्री सैंपल्स की. और जो डिस्टिंग्विश फीचर हुआ पहले में और दूसरे में कि यदि मान लो आप मोबाइल में फ्री डील कर रहे हो और आप 10 मोबाइल पे 2 मोबाइल फ्री करते हो तो उसमें टीडीएस नहीं काटना. लेकिन आप मोबाइल में डील करते हो और आप अलग से कोई नई दूसरी आइटम देते हो, विच इज नॉट ए मोबाइल, लाइक फ्री ट्रिप टू बेंगलोर, टू लंदन, और आप कोई कार गिफ्ट दे देते हो, आप कोई गोल्ड कॉइन गिफ्ट दे देते हो तो आपको टीडीएस काटा है. which seems to be the distinguishable point. How much it is, it will time to come. It's a nascent stage we are studying this section. दूसरा इन्होंने रिबेट की बात की इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, कैश डिस्काउंट, रिबेट. अगर ये कोई प्रोफेशनल फी के अंदर रिबेट देता है तो कैसे क्या बात करोगे? हमारे इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेटरी फीस रेट है. यदि हम वो चार्ज नहीं कर रहे, हम डिस्काउंट दे रहे तो हम कवर होंगे नहीं होंगे? तो मेरे ख्याल से ना तो हम डिस्काउंट में कवर हो सकते हैं, ना कैश डिस्काउंट हो सकता है, रिबेट में हम कवर हो सकते हैं. हम रिबेट दे रहे हैं एंड वी मे बी आउट ऑफ इट. दिस इज जस्ट अ थॉट. फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपको जो गिफ्ट दिए जा रहे हो अपने एम्प्लॉय को दे दिए हो बाय वर्च्यू ऑफ रिलेशन विद यू. तो उस केस में यदि गिफ्ट एम्प्लॉय को मिले हैं, डायरेक्टर को मिले हैं, तो ये माना जाएगा कि एम्प्लॉय को इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ योर रिलेशन विद द प्रोवाइडर और आपका टीडीएस काटा जाएगा. उन्होंने फर्दर ये कहा हाँ, क्योंकि आपको सैलरीड एम्प्लॉय है तो आप एक काम कर सकते हो कि जितने का उनको फ्री गिफ्ट मिला उतने का आप उनकी सैलरी परचेज बना के ऐड कर सकते हो, उसमें टीडीएस काट सकते हो. तो एक तरफ आपका इनकम हो जाएगा और दूसरी तरफ आपको डिडक्शन मिल जाएगी सैलरी में से. तो आप इसका इम्पैक्ट नील हो जाएगा और जो 194 आवर में टीडीएस कटा है उसको आप टीडीएस को बेनिफिट क्लेम कर सकते हो. फिर उन्होंने सिचुएशन और दी कि मान लो जो डॉक्टर हॉस्पिटल में है वो कंसल्टेंट है, एम्प्लॉय नहीं है, और उसको कंसल्टेंट को फ्री मेडिसिन मिल गई. तो उन्होंने कहा क्या करना है कि 194 में आपका टीडीएस कटेगा, आप डॉक्टर का टीडीएस काटोगे 194 आवर में जो आप यहाँ काम कर रहा है. तो आपको दो जगह टीडीएस काटना है इसके ऊपर. 100 रुपए ट्रांजेक्शन में 10 रुपए 20 रुपए टीडीएस कटेगा. उन्होंने कहा आप इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि प्रोवाइडर से कहो भाई तू सीधा डॉक्टर का टीडीएस काटते. तो 4 सिचुएशन उन्होंने ये दी. पांचवी सिचुएशन उन्होंने ये दी कि जो गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट कैरिंग बिजनेस ए प्रोफेशन, तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है. तो इस क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने 5 सिचुएशन को एड्रेस किया. नंबर 1 कैश डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट, रिबेट और क्वांटिटी डिस्काउंट. सेकंड फ्री सैंपल्स इंसेंटिव के रूप में जो दिए जाते हैं. थर्ड यदि एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है बाय वर्चुअल रिलेशन विद द एम्प्लॉयर कंपनी के द्वारा. यदि कंसल्टेंट को गिफ्ट मिलता है जो कंपनी में काम कर रहा है. तो पांचवा कि गवर्नमेंट एंटिटी पे ये एप्लीकेबल नहीं है. मेरा ऑब्जर्वेशन ये है there is no fit in this world. कोई चीज फ्री नहीं है. फ्री कॉफी नहीं मिलती आपको. ये सेल्स है, रिबेटेड डिस्काउंट है, ये कोई बेनिफिट नहीं है. कहीं ना कहीं इनके प्राइस ऑलरेडी प्रोडक्ट में इंक्लूड होते हैं. आप 100 रुपए की चीज 200 की कर देते हो और कहते हो 1 to 1 फ्री. तो दिस इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ परक्यूजर. दे आर ट्राइंग टू रीराइट द बिजनेस ट्रांजेक्शन व्हिच इज नॉट, दे कैन नॉट डू. फ्री सैंपल जो डॉक्टर को मिलता है देयर इज ए कैप बाय एमसीयू कि भाई आप 10 आइटम 5 आइटम देते हो. ये क्यों दिए जाते हैं? टू अपडेट हिम अबाउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का नेचर क्या है, क्या नहीं है. और जनरली इन पर लिखा होता है कि नॉट फॉर सेल. तो जो वो नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है उनके ऊपर और वो विद इन द लिमिट एमसी की, तो क्या भी आप उनको परक्यूजन बेनिफिट मानोगे?
when we discuss this question with them, उन्होंने कहा हम नहीं जानते एमसी लिमिट को, हमने 20 साल की डायरेक्शन दे रखी है, अब 20 साल से ऊपर आ रहा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। नंबर 1 जैसे नॉट फॉर सेल आपने को मिला, आपने पेशेंट को दे दिया, तो दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, आपको इनकम मिली, आप एप्लीकेशन करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? दिस इज देयर व्यू। ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू, अगर आप देखेंगे तो 194 आ क्या कहता है, अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन बाय सच रेजिडेंट, यानी कि जो रिसीवर है उसके बिजनेस प्रोफेशन से आना चाहिए, ना कि और एम्प्लॉय को जो मिल रहा है वो उसके बिजनेस प्रोफेशन से नहीं मिल रहा। इट रिक्वायर्स अ फर्स्ट डिग्री नेक्सस, नॉट द सेकंड, कि मेरे एम्प्लॉयर के रिलेशन है और इसलिए एम्प्लॉय को मिला इसलिए एम्प्लॉयर कवर है। दिस इज सेकंड डिग्री नेक्सस। यहाँ फर्स्ट डिग्री नेक्सस चाहिए जो जुडिशियल फैक्ट है, एंड until unless the judicial fact of first degree nexus satisfied, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। तो प्रोवाइडर रिसिपिएंट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, तो ये आपको मैंने लीगलिटी बताई है, लेकिन कंप्लायंस के लिए जब तक इसको चैलेंज नहीं किया जाता आपको इसे कंप्लाई भी करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है सर गाइडलाइंस के अंदर। मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन लीगलिटी के अंदर से दे रहा हूँ ना कि हाँ यदि कोई फंस जाओ तो डर लेना, कंप्लायंस के लिए तो यू हैव टू फॉलो, यू हैव नो चॉइस, इट्स बाइंडिंग ऑन यू आल्सो। सेक्शन 37 वर्सेस 194 आर, ये जो साल है ना ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए डूम्ड ईयर है। पहले 37 में स्पेसिफिकली आ गया कि आपको कोई भी खर्चा लाभ नहीं होगा, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्री सैंपल देती हैं उनके हाथ में खर्चा लाभ नहीं होगा और डॉक्टर के हाथ में वो इनकम बुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनका वैल्यूएशन कैसे करना, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्यूशन रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। उन्होंने 3 सिचुएशन दी, 2 स्पेसिफिक, एक जनरल। इन्होंने कहा यदि आपने ओपन मार्केट से परचेज किया तो जो परचेज प्राइस है वो वैल्यूएशन माना जाएगा, यदि आपने मैन्युफैक्चरिंग की है तो जो सेल प्राइस कस्टमर का है वो माने जाएंगे, जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और यदि दोनों सिचुएशन कवर नहीं है तो एफएमई माना जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू। अब हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, पहले तो कस्टमर कौन है, मैन्युफैक्चर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिटेलर कस्टमर है और रिटेलर के लिए कंज्यूमर कस्टमर है। ये हमें बात ध्यान में रखनी है, ऐसा ना हो कि मैन्युफैक्चर से सीधा कंज्यूमर पहुंच जाए। दूसरा, जब हम एफएमई की बात कर रहे हैं तो क्या हम सम सॉर्ट ऑफ लेजिस्लेशन की बात नहीं कर रहे इसके अंदर, क्या सीबीडीटी एफएमई क्योट कर सकती है यहाँ पे, क्या आप एफएमई वैल्यूएशन करो, इट इज नॉट। आप सेक्शन 56 में जितने भी सेक्शन देखोगे वहां पर लेजिस्लेचर क्योट करते हैं, एफएमई लगाओगे आप, एफएमई क्या होगी कैलकुलेशन, क्योंकि दे में डेलीगेट दैट अथॉरिटी फॉर फ्रेमिंग द रूल्स, बट दे कैन नॉट, सीबीडीटी कैन नॉट डू से कि आप एफएमई पे करो। दिस इज द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर, it's an extra legislating function that is being performed by the CBDT. Question number 3. Many a times a social media influencer is given a product of a manufacturing company so that he can use that product and make audio video to speak about that product in social media. Is that product given to such influencer a benefit or preclude? उन्होंने कहा effects of the case पे डिपेंड करेगा, लेकिन उन्होंने कहा यदि इनका केस ऑफ बेनिफिट ऑफ preclusion being given product like car, mobile, outfit, cosmetic, etc. If the product is returned to the manufacturing company after using for the purpose of rendering services, then it will not be treated as a benefit of preclusion for the purpose of section 194R of that. However, if the product is retained, then it will be in the nature of benefit of preclusion and tax is required to be deducted accordingly under section 194R of the Act. यानी कि रिटर्न कर रिटेंशन हो जाती है तो ठीक है, ये बेनिफिट ऑफ परक्यूशन माना जाएगा, टू दैट एक्सटेंट मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को दिक्कत तब आती है कि मेरे लिए डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्यूशन क्या होगी। आज मुझे एक कार मिली, उस कार के द्वारा आपको डिस्प्ले करना है, डेट ऑफ गिविंग द कार जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो उस दिन से कार काउंट होगी वैल्यू, या जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो उस दिन कार होगी, या जिस दिन डिसाइड हो कि आप इसको रिटर्न करोगे उस दिन वैल्यूएशन लगाया जाएगा। तो इन 3 सिचुएशन में किस स्टेज पे वैल्यूएशन लगाया जाएगा, इट इज नॉट क्लियर कमिंग आउट ओवर हियर। सेकंड, जो फास्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम्स हो गई, इट मे बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डिस्प्ले फॉर द बिजनेस,
तो क्या इसको रिटेंशन माना जाएगा और क्या इसे बेनिफिट माना जाएगा? इन माय व्यू नो, इट इज नॉट रिटर्नेबल। ये तो कंज्यूमर होगा ड्यूरिंग द डिस्प्ले ऑफ ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा। रिटेंशन ऑफ आइटम इज क्रिटिकल इशू दैट हैज टू बी चेक्ड। प्रियंका चोपड़ा की जजमेंट आया था ITD ट्रिब्यूनल 169 के अंदर। वहां ये तो ठीक है कि जो कार मिली ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट वो उनके हाथ में टैक्सेबल है, प्रोफेशनल इनकम। लेकिन इस जजमेंट के अंदर कहीं भी इस बात को डील नहीं किया कि वैल्यूएशन कैसे होगा। जज ने उस इशू को उठाया और बोला क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे सामने नहीं है तो हम इसमें कोई भी डिक्टेशन नहीं दे रहे हैं। तो एज ऑन टुडे भी ये क्वेश्चन ओपन है कि हाउ टू वैल्यूएशन विल बी डन इन सच केसेस। Question number 7. Whether reimbursement of out-of-pocket expense incurred by the service provider in the course of rendering service is benefit of package. मैं पहले चाहूंगा जो GST के एक्सपर्ट है वो अपना दिमाग को क्लोज कर ले GST पर्पस से, क्योंकि यहाँ GST का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जब हम अपने कुछ दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे थे उसमें से कुछ GST एक्सपर्ट प्योर एजेंट कहाँ ले गए। अब मैंने कहा ऐसे इनकम टैक्स ही रहने दो, यदि GST अप्लाई करोगे तो कंक्लूड ही नहीं हो पाओगे। नहीं मनोज जी, वेरी वेल सेड। आई थिंक दोनों एक्ट्स को हम कंफ्यूज नहीं करते। यू आर फोकसिंग ऑन द इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव। बस मैं यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा कहना चाहूंगा। प्योर एजेंट इन जीएसटी is altogether a different concept from reimbursements in income tax, for the very simple reason इनकम टैक्स को केवल इनकम से मतलब है। अगर इनकम मनोज जी ने अपने क्लाइंट से कोई भी चीज रीइंबर्समेंट ली और उसकी कॉस्ट भी वही है तो उनके पर्पस के लिए इनकम जीरो हो गई। बट जीएसटी के पर्सपेक्ट से आपके डायमेंशंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। सो लेट्स नॉट कंफ्यूज, एज वेरी राइटली सेड बाय मनोज जी, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू टू क्लैरिफाई, क्योंकि 1 घंटे इसी पे डिस्प्यूट हो गया था हमारे उस दिन ऑफिस में। तो अब हम बात करते हैं रीइंबर्समेंट। यहाँ इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया यहाँ पे बहुत बड़ा। पहले इन्होंने क्लाइंट बड़ी सुंदर लिखी, एक्सपेंडिचर विच इज द लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस प्रोफेशन if met by another person in effect benefit of purchase provided by the second person to the first person in the course of business or profession। मान लो बैंक ऑडिट होता है, बैंक ऑडिट के अंदर जो लायबिलिटी है, मेरे ट्रैवल की, यदि मुझे कहीं जाना है ऑडिट करना है, वो बैंकर की है, मेरी नहीं है। और वो लायबिलिटी यदि मैंने खर्च भी कर दी और मुझे रिम्बर्स भी हो गई तो आई एम नॉट कवर्ड इनटू इट अनलेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा वो मेरी लायबिलिटी उसको खर्च करना। बट उन्होंने इसको जब एग्जांपल दिया तो पूरे पैरा को भूल गए। उन्होंने सिंपली कहा कि यदि बिल जो प्रोवाइडर है, जो परक्यूजेट दे रहा है, उसके नाम से है तो ये बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, यदि उसके नाम से है तो ये परक्यूजेट है। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर ने मुझे हायर किया कि आपको 10 जगह जाके बैंक ऑडिट करनी है और सारी एक्सपेंसेस आपको रिम्बर्स करेंगे। अब इसमें 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन ये कि जितनी बुकिंग बैंक कराता है, बैंक पे करता है सारी पेमेंट, तो ये ना बेनिफिट है ना परक्यूजेट है। लेकिन यदि मैंने ट्रैवल बुकिंग कराई, मैंने होटल की बुकिंग कराई, सारी पेमेंट मैंने की, बाद में रिम्बर्समेंट क्लेम किया, तो ये बेनिफिट और परक्यूजेट माना जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इसमें झगड़ा मत करना, क्योंकि ये लिखा हुआ है सर्कुलर के अंदर कि कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। इसमें बहुत झगड़ा हो चुका है, लेकिन ये इनका एक मीनिंग है जो ये कहना चाहते हैं। और इनको ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो ये क्लेम करते हैं इसके अंदर इनकम एलिमेंट पास ऑन हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है और यहाँ पे चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है रेवेन्यू के साथ, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। दिस इज अगेन एन एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन जो सेक्शन 4 में नहीं है, जो एक्ट में नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहीं नहीं कहा। आई टेक इट एज एक्स्ट्रा लेजिस्लेशन, नॉट एज ए गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, नो चार्जेबिलिटी नो टीडीएस। जब तक कोई चीज चार्जेबल नहीं है और टीडीएस नहीं कर सकता, सेक्शन 4(1)(4)(2) ये स्पेसिफिकली बोलता है। अब यहाँ इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? तो कंप्लायंस आप करेंगे आप तो। मान लो किसी प्रोफेशनल की फीस 48 लाख रुपए है, कमाई उसकी पूरे साल की, लेकिन 4 लाख की रिइंबर्समेंट है
और उसने क्लेम कर ली, बैंकर ने उसको 4 लाख रुपए दे दिए, तो उसकी जो फीस है 52 लाख हो जाएगी बुक्स के अंदर, और उसको फिर अपना टैक्स ऑडिट की लिमिट में कवर हो जाएगा। दैट यू हैव टू चेक। रीइंबर्समेंट का जो कंसिक्वेंसीज है वो आपके टैक्स ऑडिट लिमिट को प्रभावित करेगा। यू हैव टू कीप इन माइंड। Reimbursement, not revenue, receive no TDS if there are certain judgments of the Supreme Court, Civil Court, other courts. Supreme Court जो कहता है वो लॉ होता है, और लॉ को तो CBDT भी ओवरराइड नहीं कर सकती. They are doing it. So this is not guidelines for removal of difficulty. In fact, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल्स इसको चैलेंज करेंगे, इसकी लिबिलिटी को सर्कुलर की, और दिस इज गोइंग टू बी स्टक डाउन. मनोज जी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा. Please, sir. You have very rightly said that this has to be challenged, and if it is challenged properly, यहाँ पे this has to be struck down. This will be struck. Sir, but of late, what I have observed in TDS provisions is, TDS by the very word is tax deducted at source, and this is income tax that we are talking about. Yes. अगर income है तो tax है, और tax है तो TDS है. Yes. इस basic principle को हमें हमेशा लेके चलना पड़ेगा. And this has been followed forever in income tax and TDS provisions. However, of late, what I have observed is, if you also see section 194N, 194Q, sales purchase के ऊपर TDS आ, 194N के अंदर सर LRS transactions के अंदर जहां पे मैं एक foreign remittance कर रहा हूँ, एक खर्चा कर रहा हूँ, but because I am sending it outside India, वहां पे TDS के provisions attract हो रहे हैं. So there are a lot of deeming provisions which are being brought in the TDS provisions, which is not exactly in line of the income tax provisions and the TDS, why the TDS was introduced. So I think कहीं ना कहीं इसको एक proper challenge before the learned authorities ये बनता है, and it if taken up very nicely, this there has to be, these provisions should be struck down in a limited manner. हम 184 एस तक पहुंच चुके हैं. एसबी आ चुका है वीडियो केस में, आर के बाद TUVWXYZ. हम 6 अल्फाबेट दूर है जेड तक पहुंचने में. मेरी एबीसीडी पूरी हो जाएगी. पूरी हो जाएगी सर, फिर डबल है शुरू हो जाएगा. On the reimbursement point also, while I understand जो मनोज जी ने एक sensitive point उठाया, I'm just adding a line further. There is a concept of privity. I think वो इन्होंने इनकम टैक्स में अब टेकअप कर लिया, जो पहले जीएसटी में ऑलरेडी टेकअप था. बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स they don't actually look at the privity. For most of us, reimbursement means मैंने जितने का लिया उतने का आगे दे दिया. I am not earning anything out of it. So my dear friend, it's time. I'm just closing my statement in one line. It is time that we start looking beyond this, and we should look into the privity of the contract between whom the original contract of supply was, and further जब मैंने अपने client से reimbursement ली, will it be called a supply or not, considering जिसने original supply करी उसकी privity मेरे साथ थी, ना कि मेरे client के साथ. With this, sir, please. Thank you, sir. Thanks a lot. If there is a dealer conference to educate the dealer about the product of the company, is it benefit or purchase it? उन्होंने कहा the expenditure pertaining to dealer business conference would not be considered as benefit or purchase it for the purpose of section 194R of the Act in a case where a dealer business conference is held with the prime object to educate dealers, customers about any of the following or similar aspects: new product being launched, discussion as to how the product is better than the others, obtaining orders from dealers and customers, teaching sales techniques to dealer customer, addressing queries of dealers and customers, reconciliation of accounts with dealers and customers. उन्होंने 6 एग्जांपल दिए जहां पे हम नहीं लाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि these conferences are in the nature of incentives and benefits to select dealers and customers who have achieved certain targets, तो हम ये मानेंगे बेनिफिट ऑफ एक्यूजिट है इन द हैंड्स ऑफ डीलर. फर्दर उन्होंने कहा कि इन द फॉलोइंग केसेस द एक्सपेंडिचर वुड बी कंसीडर्ड एज बेनिफिट ऑफ एक्यूजिट. इसमें नंबर 1, एक्सपेंसेस एट्रिब्यूटेबल टू लेजर ट्रिप और लेजर कंपोनेंट इवन इफ it is incidental to the dealer or business conference.
expenditures incurred for family members accompanying the person attending dealers public business conference, expenditure on participation of dealers in conference and business conference for days which are on account of prior stay or overstay beyond the dates of such conference. उन्होंने इन 3 सिचुएशन को कवर किया कि जहां पे लेजर ट्रिप या लेजर कंपोनेंट हो या फैमिली मेंबर्स हो या आपकी कॉन्फ्रेंस 10 दिन की है, आप 2 दिन पहले आकर और 2 दिन बाद में जाते हो, देन वी शैल परज्यूम इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्यूजिटर. हमारे ऑब्जर्वेशंस, लेजर ट्रिप क्या हो सकता है, जैसे आपको कॉन्फ्रेंस लंदन में आपने कर दी, लेजर कंपोनेंट आपको रूम दे उसमें स्पा की फैसिलिटी दे दी, उसमें भी लेजर कंपोनेंट. ओवर स्टे फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू डे में भी कवर्ड, टाइम टू टेल. और जो जो डॉक्टर के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है कि भाई अबाउट टू अपडेट अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट दे आर लॉन्चिंग, सो दैट नॉट डिफरेंट फ्रॉम द डीलर कॉन्फ्रेंस. दूसरा, देयर जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट, जहाँ फैमिली मेंबर्स की कंपनी वाइफ को करना बिजनेस पर्पस माना गया है, तो दिस इज ओवररूलिंग दैट जजमेंट व्हिच मे नॉट बी करेक्ट. तो फैक्ट टू फैक्ट बढ़ेगा, फैमिली मेंबर्स हर केस के अंदर बेनिफिट पैकेज है या नहीं है. हेलो श्वेता, ब्रीफ ऑफ दैट. ऐसा है कि विक्रम को फोन किया था लेकिन उसके बच्चे बड़े हैं, वो भी कंफर्टेबल नहीं था. सचिन जी अपना को म्यूट कर लीजिए. डन सर. सेक्शन 9 में उन्होंने कहा कि if the benefit public perquisite is in kind or partly in kind, then the person responsible for providing such benefit perquisite is required to ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit of perquisite before releasing the benefit of perquisite. How can such person be satisfied that tax has been deposited? आप जो प्रोविजन फर्स्ट पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप काइंड में दे रहे हैं या पार्टली इन काइंड में दे रहे हैं तो आप इंश्योर करोगे उस पर टैक्स पे हो चुका, तो आप कैसे करोगे. तो उन्होंने कहा कि जितने अमाउंट का टीडीएस है, यदि वो रिसिपिएंट उतने अमाउंट का टैक्स जमा करा दे एज एन एडवांस टैक्स और डिक्लेरेशन दे दे कि ये मैंने आपको उतना ही टैक्स जमा करा दिया है जो कि टुवर्ड्स बनता है अलोंग विद द चालान, तो ये सफिशिएंट कंप्लायंस होगी और इसके जो प्रोविजंस हैं वो टीडीएस रिटर्न के अंदर अपडेट किए जा चुके हैं. तो हमें मानेंगे आपने इसकी सफिशिएंट कंप्लायंस कर दी. जैसे आपको मान लो आपने किसी डीलर ने कार जीती और कार की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, 10 लाख टीडीएस बनता है, तो डीलर क्या करेगा, 10 लाख का चालान विद डिक्लेरेशन के 10 लाख का चालान मैंने कार की तरफ जमा कराया है वो हैंड ओवर करेगा कंपनी को, देन इट विल बी सफिशिएंट कंप्लायंट विद दिस सेक्शन. तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आएंगे. अच्छा, इन्होंने एक बात और भी कही कि आप यदि एडवांस टैक्स का चालान की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप पूरा टीडीएस जमा करा सकते हो. मतलब 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख टीडीएस जमा करा सकते हो. फिर 10 लाख नहीं कराओगे, आप ग्रोसिंग अप भी करोगे एंड देन आप 11 लाख जमा कराओगे. क्या ग्रोसिंग अप का भी इशू आएगा जो आपको ध्यान में रखना है. मेरे ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें जो मेजर इशू आएगा वो इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट ऑफ एडवांस टैक्स आएगा. जिसके आदमी आ रहा है, मान लो उसे मार्च महीने में बेनिफिट मिला 1 लाख रुपए का, और उस 1 लाख पे 15 जून के पास 20,000 की लायबिलिटी बनती थी मेरी एडवांस टैक्स की, 15 सितंबर को 30,000 की बनती थी, 15 दिसंबर को 75,000 रुपये की बनती थी और मार्च में 90,000 की बनती थी, और मैंने उसके अंदर डिफॉल्ट किया है, तो मुझे उन केसेस के अंदर इंटरेस्ट और एडवांस टैक्स देना पड़ेगा फॉर रिसिपिएंट यदि एडवांस टैक्स का इशू आता है. ग्रॉसिंग अप will be allowed as a deduction or not, it will be another challenge. There are certain judgments in specific situations वहाँ पे ग्रॉसिंग ऑफ टैक्स को अलाउ नहीं किया गया. फिर क्लेमिंग इनकम वर्सेस क्लेमिंग टीडीएस बाय द पे, ये भी इशू रहेगा कि आप मान लो उसने ग्रॉसिंग अप नहीं किया और 25 लाख पे 2.5 लाख जमा करा दिया, तो यदि आप टीडीएस क्लेम करोगे 2.5 लाख का तो आपको 25 में 2.5 लाख 27.5 लाख रुपए की इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी. दैट्स पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड. क्वेश्चन नंबर 10. सेक्शन 10 जो इफेक्ट है जुलाई से आया है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेकंड प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 of 194 R of the Act provides that provisions of this section does not apply where the value or the aggregate value of the benefit of purchase provided or likely to be provided to resident during the financial year does not exceed 20,000 rupees. It is not clear how this limit of 20,000 is to be computed for the financial year 22-23. ये बहुत क्लियर है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है. तो मालूम है 10,000 काम किया 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक और 1 जुलाई के बाद 11,000 काम किया, तो टोटल काउंट हुआ 21,000 रुपए और मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा 21,000 रुपए के ऊपर.
और बाई चांस मैंने 25 साल का काम पहले कर चुका हूँ 30 जून तक, बाद में 10 साल का काम करता हूँ, तो 25 साल तक मुझे टीडीएस नहीं काटना था 30 जून तक, लेकिन जो मैं 10 साल का एक्स्ट्रा काम करूंगा जुलाई को, उसको मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। दिस इज होल क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेटल्ड है। आगे चलते हैं, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ प्रोक्यूजन। इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे सर्कुलर के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कि बेनिफिट प्रोक्यूजन है क्या। दिस इज जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल मुंबई ट्रिब्यूनल, जो हेलो मूड इम्प्रूवर, जहां उन्होंने कहा बेनिफिट प्रोक्यूजन का मतलब क्या है। The word benefit of प्रोक्यूजन has been used in section 28(4), which have to be read together and would draw color from each other. Normally, the term preclusion denotes meeting out of an obligation of one person by another person, either directly or indirectly, or provisions of some facility or amenity by one person to another person. And from the very beginning, the person providing such facility or concession knows that whatever is being done is irrevocable to him, as it has been granted to a person as a privilege or right of that person. In this view of matter, the word benefit has also to be interpreted in the same manner. At the time of execution of the business transaction, one party gives to other party some irretrievable benefit or advantage. इसके अलावा और भी आपको काफी कुछ मिलेगा जब आप 28(4) के ऊपर जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है बेनिफिट ऑफ प्रोक्यूजन के ऊपर, उसको आप समझेंगे। और मेरे ख्याल से राइट प्रोसेस, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे कि बेनिफिट है या नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ प्रोक्यूजन डेफिनेशन क्या है, क्या इसका मीनिंग होना चाहिए, क्या प्रीवियस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं अंडर सेक्शन 28(4), वो आपकी हेल्प करेंगे इसके अंदर। इशू जो मेरे सामने आ रहे हैं, राइट टू रिसीव। मान लो आपको आज एक टारगेट अचीव करने पे 10 करोड़ की गाड़ी मिलनी थी, आपने एक पर्टिकुलर अचीवमेंट करना था तब गाड़ी मिलनी थी, लेकिन डीलर ने, मैन्युफैक्चरर ने आपको बूस्ट अप करने के लिए गाड़ी आज ही दे दी कि मैं तेरे को देता आज ही रहा हूँ, लेकिन जब तू 10 करोड़ अचीव करेगा तब मैं तेरे नाम से ट्रांसफर करूंगा। तो जो राइट टू रिसीव है मेरा, इसके अंदर जो अप्रूवल हुआ है, मेरे को 10 करोड़ के पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने पे मिलेगा। तो तब तक इवन इफ आई एम गिविंग दिस कार, इट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्रोक्यूजन टू मी, क्योंकि हमें सेक्शन 5 की लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा तभी हम 28 पे आ सकते हैं। Guidelines for removal of doubt under section 194(r)(2) can be issued after the law comes into effect. How before it? So जब लॉ इफेक्ट में आ गया, लोगों ने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, तब आप इश्यू कर सकते हो। पहले कैसे आप इश्यू कर सकते हो? सेक्शन 119 जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है और सेक्शन 194(r) गाइडलाइंस सेक्शन है, ये हमें इसके डिफरेंस को दिमाग में रखना होगा। 194(r)(2) बात करता है गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ डाउट, मींस के प्रोसीजरल लॉ बता सकता है कि आपको कोई दिक्कत आई तो कैसे ठीक करेंगे। आप सब्सटेंटिव लॉ नहीं लेके आ सकते जो सर्कुलर के द्वारा लाया जाने की कोशिश की गई है। दूसरा इशू है का टैक्सेबिलिटी ऑन निश्चित बेसिस और ड्यू बेसिस, क्योंकि जनरली अगर प्रोवाइडर अपने बुक से प्रोविजन कर लेता है ड्यू बेस के ऊपर, आपको अगले साल प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन माय व्यू ये जो टैक्सेबिलिटी रिसिपिएंट के हाथ में आई है, शुड बी ऑन द रिसीट बेसिस व्हेन ही गेट्स दिस बेनिफिट, नॉट बिफोर दैट, बट दैट विल बी अ चैलेंज ऑन रिसीट वर्सेस ड्यू बेसिस। क्रेडिट कार्ड के जो पॉइंट्स मिलते हैं, इट्स अ बेनिफिट नो डाउट, बट यहाँ पे हमें देखना होगा क्रेडिट कार्ड कॉर्पोरेट है, जनरल है। यदि जनरल क्रेडिट कार्ड है, आप और मैं सब ऑन कर रहे हैं, इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर मी, तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जो मैंने ले रखा है वो कोई बिजनेस है, उस पर जो आपको पॉइंट मिलेंगे उन पर टीडीएस कटेगा, चाहे आप यूज करो ना यूज करो, क्योंकि आपको एक राइट मिल चुका है, बेनिफिट मिल चुका है। नॉट यूजिंग और सरेंडरिंग इट, इट्स योर फॉल्ट। आप ये नहीं कह सकते मैंने यूज नहीं किया बेनिफिट को तो आप मुझ पर टीडीएस मत काटो। इसीलिए जो फ्री पॉइंट मिलता है बिजनेस के अंदर, आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या मेरे बिजनेस मिल रहे हैं या मेरे क्या बिजनेस नहीं मिल रहे हैं। जो इसमें जुडिशियल पॉइंट रहेगा इस पूरे 194(r) में, देयर शुड बी बेनिफिट ऑफ प्रोक्यूजन। अरुण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 286 ITA 89 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। यहाँ क्या था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तक रेंट से कॉम्बिनेशन मिला था, तो उसके अंदर एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा था इंक्लूडिंग दैट मिलाते हुए, तो मैटर ट्रेवल टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक के पहले अपॉर्चुनिटी जो एम्प्लॉय चैलेंज कर रहा है कि ये मुझे कोई बेनिफिट या प्रोक्यूजन नहीं है, तो पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसके लिए बेनिफिट है, प्रोक्यूजन है, ओनली देन इट कैन बी टैक्स्ड, अदरवाइज नॉट। बाउंड्री ऑफ गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस इशू है ये नहीं है कि सेक्रोसेंट हो गई, जो मैंने आपसे पहले कहा था और इसने कोर्ट की पावर्स स्नैच कर ली उसको इंटरप्रेट करने की। देयर आर जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुकुम चंद, उन्होंने कहा द लिंक रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 40
is of the second category because the above section contemplates that rules would have effect unless modified or annulled by the House of Parliament. The act of central government in laying the rules before each House of Parliament would not, however, prevent the court from scrutinizing the validity of the rules and holding them to be ultra-vires. If on such scrutiny, the rules are found to be beyond the rule-making power of the central government. The Parliament can delegate its legislative power within the recognized limits when a rule or regulation is made by any person or authority to whom such power has been delegated by the legislature. It may or may not be possible to make the same so as to give retrospective operation. It will depend on the language employed in the statute provisions, which may in express term or by necessary implications empower the authority concerned to make a rule or regulation with retrospective effect. But where no such language to be found, it has been held by the court that the person or authority exercising the sovereign legislative function cannot make a rule, regulations or bylaws which can operate in retrospective effect. तो इसी तरह सिमिलर जजमेंट है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर द पर्पस ऑफ टाइम मैं इसमें नहीं जाऊंगा सेम चीजें जस्ट आई वांट टू हाईलाइट थैंक्स फ्रेंड्स विद दिस आई जस्ट एंड माय डेलिब्रेशन ऑन दिस आई होप मैंने इसके साथ जस्टिस किया आई होप सो मनोज जी आपने बहुत अच्छा समझाया सेक्शन 194 के बारे में बहुत कुछ बताया और बहुत ही क्लैरिटी दी है आपने कोशिश की है और बीच बीच में हमारे गौरव जी भी बहुत प्रकाश डालते रहे हैं और जसपाल सेठी जी ने भी नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार गौरव जी से भी वो जीएसटी इम्प्लीकेशंस ऑन दिस 194 गौरव जी इस पर क्या Suresh, if you permit, I think we also need to listen to Jaspal ji first on 194. ओके तो जसपाल जी आप अपना सप्लीमेंट ऐड कर दीजिए जो अभी तक उन्होंने बोला काफी कुछ कवरेज की फिर भी जो भी आप सप्लीमेंट करना चाहें एक बार प्लीज वेलकम फॉर दिस सेशन जसपाल जी प्लीज Gaurav ji, thank you so much for the opportunity. But I think if we look at the provisions part and the legalities part of the provisions of Section 194R, I think Manoj ji ने काफी कुछ cover कर लिया है. There are certainly some examples which I would like to take up. But मैं ये कह रहा था कि we can take this up when we take up the questions, because a lot of issues that I want to take up are by way of examples and problems. तो if you feel it fine कि वो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं and साथ साथ वो एग्जांपल्स हम कवर कर लेंगे या हम अभी ये सुन लेते हैं सारे क्वेश्चंस का एक छोटा सा सेमिनार दोबारा रख लेते हैं हाउ I would suggest कि हम अभी 194R के क्वेश्चंस टेकअप कर लेते हैं हिमांशु सिंगल जी अगर एक मिनट के लिए आ जाएं क्योंकि वो भी आज के उनका 47 GST yes sir I am here हिमांशु I am here sir looking into the paucity of time 47 GST मीटिंग की जो अपडेट्स हैं क्या वो हम दोनों जो हम दोनों ने टेकअप करना था कैन वी टेक इट अप द नेक्स्ट टाइम एंड वी कीप इट वेरी सून maybe Tuesday yes sure yeah because 194R is right now the burning issue among all the GST council ने भी काफी burning issue उठा दिए हैं fire is on there also मेरा व्यू ये था कि जो ये जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे बेनिफिट और पॉजिटिव पे लोग आएंगे ये अभी नेशनल स्टेज पे और सर्कुलर वैसे भी काफी ज्यादा बियॉन्ड गया पावर के और काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर हम राइटली ओपिनियन दें इट मे बी रॉन्ग इट मे बी राइट सो there are many experts sitting here हम क्वेश्चंस टेकअप करते हैं ताकि एक प्रिलिमिनरी ओपिनियन थोड़ा फॉर्म हो जाए everybody understand the topic तो I think वेनु जी ने भी क्वेश्चन पुट अप करे हैं जसपाल जी कुछ एग्जांपल बोलना चाह रहे हैं so जसपाल जी entire question answer session and your own examples I would request you to take up आपको चैट बॉक्स खोलना पड़ेगा a lot of questions are there I am taking it I would request any member who wants to add on anything प्लीज आप जसपाल जी को एड्रेस करके मनोज जी को एड्रेस करके आप क्वेश्चन को इलैबोरेट या अपना व्यू रखिए प्लीज over to you sir thank you so much so I'll just take up the questions I'll start taking the questions from the chat box the first question and the query was put up by CA Venugopal ji and he says that holiday travel trips provided to dealers gifts provided on achievements of sale targets would these be covered in section 194 sir definitely yes the holiday trips the gift vouchers the sale targets in kind
जसपाल These जी, are to be covered under section your- 194R, your and they have to be voice- valued in terms of money, and only the section 190. मैं ले लेता हूँ सर. So Please. since some problem. Venugopala ji question है, holiday and travel trip provided to dealer by gift provided on achievement of certain sale target would be covered. Yes, it would be covered. ये सब कवर होंगे और जो डीलर प्रोवाइड कर रहा है उसके डिटेल्स का. जसपाल जी, आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है बीच में. नोबडी इज एबल टू हियर इट. सम इंटरनेट स्नैग एट योर एंड. एक बार प्लीज उसको थोड़ा सा देख लीजिए. वी लॉस्ट यू. I'll request, मैं एक बार इसको देखता हूँ. तब तक मनोज जी, if you can take up the questions, हाँ I'll सर, just take मैं ले रहा हूँ. सेकंड क्वेश्चन विजय वर्गिया जी का है. गिफ्ट free samples other items of scheme given to dealer on various conditions as achieved on sale target on festival. How can we justify it? सर जस्टिफाई नॉट जस्टिफाई का इशू नहीं है. यदि कोई टारगेट अचीव करने पे आपको इंसेंटिव मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो वो आपकी इनकम है. आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दें कि भाई ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या जस्टिफाई करूं, तो एक डिफरेंट इशू है. बट टारगेट अचीवमेंट पे अगर कुछ भी मिलता है तो इससे गिफ्ट, इट्स एन इनकम. सर पीपीटी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. मनोज जी, आई थिंक बोथ ऑफ देम जो क्वेश्चन पर्टिनेंट उठ रहा है वो ये उठ रहा है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. वेनु जी, आर यू देयर विद अस? और विजय वर्गिया जी सर. यस सर. वेनु भाई, कैन यू इलैबोरेट ऑन द एंगल इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जैसे आपने कहा गिफ्ट प्रोवाइडेड ऑन अचीवमेंट ऑफ सेल टारगेट, एवरीबॉडी नोज इट्स अ इनकम पहले भी. अब 194R में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक एंड हाउ विल इट बी डिफरेंशिएटेड? मैं आपका एक सप्लायर हूं, मैं आपसे माल खरीदे जा रहा हूं और आपने मुझे कहा कि गौरव, द मोमेंट यू अचीव अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़, परचेज ऑफ 10 करोड़ फ्रॉम मी, मैं आपको दो तरीके से इंसेंटिव कर सकता हूं. नंबर एक, मैं आपको 2% डिस्काउंट एडिशनल दूंगा, या मैं आपको अपना प्रोडक्ट, सपोज आई एम सप्लाइंग यू लैपटॉप्स, सो आई गिव यू 10 लैपटॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, बट एक में इन काइंड जा रहा है और एक में क्रेडिट नोट जा रहा है. सो 194R की implications कैसे होंगे? वेनु जी, add please whatever I have missed on. सर सो बट बियॉन्ड दिस, नाउ किसी को टाइटन वॉच गिफ्ट मिला या उनको दुबई हॉलिडे ट्रिप भेजा गया. Now the moment these kind of transactions that happen, no business records this as an income. A businessman किसी ने उनको एक टाइटन वॉच दिया या दुबई को लेके गए, उनके बुक्स में इनकम की तरह नहीं रहेगा. Now the moment 194R is hit, इनके 26 years में there is an entry for some X value for which there is no income. Now, given that the faceless assessment is coming up, isn't this going to create another issue? Is just want to get a. Venugopala ji, I got your question. Venugopala ji, इसी को तो पकड़ने के लिए लाया गया है. सेक्शन 28(4) के अंदर वो आपकी इनकम है, गोल्ड कॉइन आपकी इनकम है, फ्री टिप आपकी इनकम है, लेकिन आप डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो इसको पकड़ने के लिए सेक्शन आया 194R. Precisely. Now you have to declare it. सर इसी में, हेलो सर, इसी में एक चीज और ऐड कर लेते हैं. मान लीजिए हमने अपने एम्प्लॉय को कोई ट्रेवल टूर दिया, उनको कुछ भी बेनिफिट दिए, तो सर मैंने 194C में मैंने वो टीडीएस ऑलरेडी पहले काट लिया. अब मैं 194C में भी एम्प्लॉय के लिए नहीं है. आप एम्प्लॉयर रिलेशन को अगर आपने अपने एम्प्लॉय को टूर के लिए भेजा है फॉर योर बिजनेस पर्पस, तो वो आपका रेगुलर एक्सपेंस है. इट इज नॉट अ लेजर और अ परक्विजिट गिवन टू हिम. बट अगर आपने उसको एक टूर पे भेजा है एज अ परक्विजिट, achievement to a sales target or any other incentive in terms of achieving doing a nice job or as an incentive in addition to the salary, this is a perquisite only then, and that is what is to be valued under 194. नहीं सर, अगर वो किसी काम से जा रहा है तो टैक्सेबल नहीं है. नहीं जसपाल जी, नो. अगर जहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वहाँ 194R आउट है, क्योंकि इट्स नॉट ए कनेक्शन का बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉय. आप 194R को 192 कंफ्यूज मत करो. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर कहीं भी 194R नहीं आएगा. इट्स ओनली कम व्हेन द वो बिजनेस है, मेरे रिसिपिएंट के को बिजनेस है. आप दो चीजों को, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का 194R में कोई रोल नहीं है. नहीं, लेकिन मनोज सर, इन्होंने ना जो FAQ भेजा है डिपार्टमेंट वालों ने, उसमें उन्होंने बोला है
कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने नाम से अगर बेनिफिट ले रहा है और एम्प्लॉयर को वो नहीं आगे सर, परस्यू कर रहे हैं। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या कह रहे हैं। जी सर। कि मान लो गौरव जी बहुत अच्छा एडवोकेसी का काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी कंपनी ने गौरव जी से वो काम कराया और गौरव जी के एम्प्लॉइयों ने भी उसमें हेल्प की और उस कंपनी ने गौरव जी के एम्प्लॉइयों को फॉरेन ट्रिप करा दिया। तब उस केस के अंदर वो कंपनी है वो गौरव जी का टीडीएस काटेगी क्योंकि उन एम्प्लॉइयों को जो बेनिफिट मिला है दैट वर्च्यू बाय रिलेशन ऑफ द गौरव जी। वो ये कह रहे हैं, वो हम गौरव जी और गौरव जी के एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे, वो जो कंपनी जिसने दिया क्लाइंट है गौरव जी का उसकी और जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला उसकी बात हो रही है। तो दो चीजों को कंफ्यूज मत करो। अब अपना क्वेश्चन पुट करो। एक क्वेश्चन अभी आया था जहां पे ये था कि अगर हमने मान लो कि 100 आइटम्स भेजी हैं एक पर्टिकुलर चीज और उसके साथ साथ अगर वो 100 कंप्लीट हो जाती है तो 10 और भेज देते। सी इन दैट केस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दी गाइडलाइंस कवर्स दैट इशू। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने 100 आइटम्स कंप्लीट करने के ऊपर 10 आइटम्स एडिशनली भेज दी हैं, इसेंशियली इट मींस कि हमने 110 आइटम सेल करी थी और उसकी कॉस्ट हम 100 की। तो क्वांटिटी डिस्काउंट है उसमें कवर नहीं होगा सर। नहीं, सो मनोज जी अगर वो 10 आइटम्स की जगह पे मैंने 10 गोल्ड कॉइन्स दे दिए तब भी। और नहीं सर, जो उनका सर्कुलर पढ़ के लगता है, अगर आप एक तो क्वांटिटी डिस्काउंट की बात है और एक फ्री सैंपल की बात है। सर फ्री सैंपल इज अ डिफरेंट थिंग। देखो मनोज जी कैन स्पीक इन बिटवीन। हाँ सर प्लीज। 194 आर का बेसिक फंडा जो है ना वो मेरे हिसाब से ये है कि इफ द एंटिटी इज क्लेमिंग डिडक्शन out of his income, then the TDS is applicable. Perfect, sir. Perfect. So whatever may be the payment, if I am claiming deduction against that payment, TDS will be applicable. Exactly. Sir, नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। There may be certain situations. सर अगर कोई बिजनेस एक खर्चा बुक कर रहा है उसके अगेंस्ट वो इनकम है किसी और की, सिर्फ उस चीज को टारगेट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट टीडीएस काट के आइडेंटिफाई करना है लोगों को कि वो खर्चा किस किस के अगेंस्ट किया है और वो टैक्सेबल बने। यस, दैट इज द प्राइमरी रूल ऑफ 194 आर। 194 आर की ये है कि भी मेरा खर्चा जो है मैं कह रहा हूँ तो सामने वाले की जो इनकम बन रही है उस पे टीडीएस कटिए। प्रिसाइजली सर। Now the question is, Sunil ji is also, Sunil Garg is also with us. So Sunil bhai, if you want to add something, please feel free, sir. ठीक है करो जी, मैंने उसको सुन नहीं पाया था, मैं कुछ और काम में लग गया था। ठीक है, ये 194 आर के अंदर any kind of perquisite, the intent of the government is जो perquisite सामने जा रहे हैं जो सामने वाला डिक्लेयर नहीं करेगा, as वेनु जी has said, कोई घड़ी मिल गई, कोई गाड़ी मिल गई, सामने वाला अपनी इनकम में उसे डिक्लेयर नहीं करता है, बट जो बिजनेस एंटिटी है as प्रेसिडेंट सर has just mentioned, वो उसको अपनी डिडक्शन में क्लेम कर लेता है। Now a person is getting a deduction, but the other person is not disclosing the income. The whole intent कि उसका टीडीएस काट के सेकंड पर्सन को भी आप पुल करिए इन द इनकम पार्ट। अब प्रॉब्लम मनोज जी ये है कि इस इंटेंट के साथ क्या क्या और नॉर्मल कोर्स में जो टीडीएस में नहीं जाता, ऐसा क्या क्या है जो और चला जाएगा। आई थिंक वी नीड टू आंसर दैट लिस्ट। मैं समझा नहीं सर, दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर मैंने एक काम किया, आपने खुश होकर मेरे को एक घड़ी गिफ्ट करी। नाउ आप उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर ले लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे कि मैंने गौरव गुप्ता को मैंने ये एक घड़ी दी इन काइंड। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर 194J में whatever payment was being done from you to me, already TDS was supposed to be required to be made. What was the need of 194R to come in? Number one. Number two, मैंने उन इंसेंटिव्स को देखना है जो मैंने सेकंड पार्टी को दिए और नॉर्मल प्रोविजंस में कवर नहीं हो रहे, तो रेजिडुअल है 194R, या 194R will supersede all my TDS provisions in any case. And number three, what are the specific situations where you think this section is applicable? मेरा क्वेश्चन आपसे और जसपाल जी से बहुत स्ट्रेट है, ये 3 पॉइंट्स।
सर मैं जसपाल जी आप दे रहे हैं जवाब? जसपाल जी आप दे रहे हैं? मैं दूं सर सर? मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक हो रहा है। चलो ठीक है, मैं एक बार अपने मोबाइल से अलग से ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो सर ठीक है, Just मैं करता हूँ। there is some issue in the नो office. इशू, नो इशू। Just allow me to join back in 1 minute. गौरव जी आपने क्वेश्चन पे एक बार बोलते जाओ, मैं आंसर देता चला जाऊंगा, जस्ट टू कैच अप। सर पहला क्वेश्चन, अगर किसी भी परक्विजिट को किसी प्रोफेशनल को गिफ्ट में मिलता है, मैं सिंपल फर्स्ट केस ले रहा हूं, तो प्रोफेशनल को जो भी पेमेंट एक बिजनेस करेगा, वेदर इन कैश और इन काइंड, it was a part of the remuneration of the professional and therefore TDS should have been deducted under 194J. So suppose मैंने एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट से अपना घर डिजाइन करवाया, उस व्यक्ति ने एक फीस ली 20 लाख, I was very happy with his work, I gifted him a watch also worth 1 lakh. Now I was supposed to, not घर but office, I was supposed to deduct his TDS on 21 lakhs ideally, but 1 lakh was in perquisite form, in form of not in his fees bill, as a ex gratia, as a gratitude towards him, but I will still claim it as an expense in my office P&L. Was I supposed to deduct under 194J, or should I deduct under 194R on 1 lakh and J on 20 lakhs? परफेक्ट क्वेश्चन। पहले तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपके खर्चे से मिलते हैं, ये प्रोवाइडर खर्चों का तभी सेक्शन 28(4) इंडिपेंडेंट है कि वंस योर बेनिफिट एंड परक्यूजिट, चाहे सामने वाले खर्चा क्लेम किया हो नहीं किया हो, आपके हाथ में इनकम है, आपको टैक्स पे करना है। लेट इज वेरी क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। आपकी साहब ने जो मेन एग्जांपल ऑफ फार्मा कंपनी का है, उनको फ्री सैंपल का खर्चा 37 में अलाउ भी नहीं है, तभी डॉक्टर के हाथ में इनकम माना जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्वेश्चन कहा 194R, ये खाली 194J वर्सेस 194R नहीं है, 194H वर्सेस 194R भी आएगा, 194C वर्सेस 194R भी आएगा। ये चीजें चलेंगी। हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, जहाँ मैं स्पेसिफिकली सेक्शन 194J में कवर हो गया हूँ, 194C में कवर हो गया हूँ, 194H में कवर हो गया, मैं उन्हें अप्लाई करूंगा। जहाँ पे 3 सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे तब मैं 194R में जाऊंगा। जनरल वर्सेस स्पेसिफिक का हमें कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि इसमें डिस्प्यूट होने वाला है, जहाँ भी 10% का टैक्स होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे जैसे 194C 2% की बात करता है, 194H 5% की बात करता है और 194R 10% की बात करता है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट डिस्प्यूट करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें जनरल वर्सेस स्पेसिफिक का प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, और उस पर हमने काफी डिस्कशन इसके ऊपर किया हुआ है पहले भी, तो हमें वही बातें समझ में आती है। फर्स्ट क्वेश्चन का सर ये हो गया आपके सर। आई थिंक इसका आंसर वहां लाई करता है, देयर इज अ ट्रांजैक्शन which I am already covering it up from a lot of years, और वहां पे मैं 194C के अंदर या H के अंदर ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन को मैं कवर करता हुआ आ रहा हूं, वो ट्रांजैक्शन मेरी 194R में नहीं जाएंगी। And if we also go by the provisions of the general provisions of income tax, जो सेक्शन पहले आ रहा है उसकी इंप्लीमेंटेशन पहले होगी, unless it is specifically covered in a particular section. तो आई थिंक जहां पे कंफ्लिक्ट आएगा कि 194C का एप्लीकेशन होना है या 194R का होना है, आई थिंक प्रेफरेंस विल बी ऑन 194C in spite of the fact that it is on a higher rate of tax in 194R. But yes, this is prone to litigation. It is only for the time to tell कि ये कहां जाए। Do we have Ajay Gupta ji with us, because he has posted a lot of interesting question. Ajay ji, are you there with us right now? आपका गौरव जी आपके 3 क्वेश्चन थे, कोई और रह गया तो पहले उसको ले लें। मेरे 3 क्वेश्चन थे, तो 2 तो मैंने कंबाइन करके आपके साथ क्लोज कर लिए। अब थर्ड के ऊपर जैसे अभी जसपाल जी ने कहा कि द लिटिगेशंस आर प्रोन, तो आई थिंक लेट मी पुट इट दिस वे, एक बार हम बाकी क्वेश्चंस टेकअप कर लेते हैं एंड देन विल कम बैक टू माय ओन क्वेश्चन व्हिच वाज a bit contradictory or I say controversial. तो अजय गुप्ता जी क्वेश्चन सर। गौरव जी एक बात पूछनी थी, एक सॉरी मनोज जी, आपने कहा है कि भाई आपका इससे बिजनेस एंटिटी के एक्सपेंडिचर क्लेम करने से कोई ताल्लुकात नहीं है, 194R में कोई ताल्लुकात नहीं, सामने वाले की तो इनकम होगी अगर उसको कुछ मिला है, ठीक है ना जी। मेरा पॉइंट ये था कहने का कि 194 जो आया है
वो खाली टीडीएस पर्पस से है कि मुझे अगर बिजनेस एंटिटी ने कोई एक्सपेंस क्लेम किया है तो वो उसके ऊपर टीडीएस काटेगा। अगर वो नहीं काटेगा तो पहले भी इनकम थी सामने वाले की। बिल्कुल आई एग्री विद यू, वहां मैं एग्री हूँ, लेकिन हम ये नहीं पढ़ सकते कि ये जो खर्चा क्लेम नहीं कर रहा तो इनकम नहीं होगी। नहीं, वो तो पहले ही है इनकम उसकी। हाँ, तो पहले ही इनकम। माय पॉइंट इज दैट अग्रीड सर, बिजनेस एंटिटी इज नॉट डिडक्टिंग टैक्स, तो वो ये नहीं कह सकते कि ये सामने वाले की अगर उसको पता लग गया तो इनकम है, नहीं पता लगा तो नहीं है। परफेक्ट नहीं सर, एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा ऑन अ वेरी वेरी स्लाइट पॉइंट कि यहाँ पे द वर्ड्स यूज्ड इन सेक्शन 194 आर, आई विल रीड इट, सेक्शन सबसेक्शन 1, any person responsible for providing to a resident any benefit or perquisite whether convertible into money or not arising from a business or exercise of profession by shall before providing such benefit or perquisite as the case may be। यहाँ पे डिफाइन हो गया सर कितने पे काटना है। नाउ सर वेदर पेड और नॉट, जहां पे उसने अपनी बुक्स के अंदर दूसरे बंदे को क्रेडिट कर दिया, नाउ मैंने क्रेडिट कर दिया और उसको अपने P&L के अंदर बुक किया या नहीं किया इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, या मैं उसको एक्सपेंस उस पे खर्चा क्लेम कर रहा हूं या नहीं कर रहा है इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर मैंने अपनी बुक्स के अंदर दूसरे वाले को क्रेडिट दे दिया है, जसपाल जी, दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ इनकम टैक्स। इफ आई डोंट क्लेम एनी एक्सपेंस तो मेरा कहां से लायबिलिटी आएगी? अगर मैं बिजनेस एंटिटी में क्लेम ही नहीं कर रहा हूं कुछ। completely agree with you that what you are saying, sir, I 100% agree with you, that is the intent of the tax, but that is not the language of the tax। लैंग्वेज ऑफ द टैक्स है कि पेड और नॉट पेड। यू मीन टू से दैट कि पेड सर और इवन इट इज नॉट पेड, अगर मैंने मान लो सर एक कैश इंसेंटिव है उसकी बुक्स में क्रेडिट कर दिया, हाँ जी, और मैंने उसको ट्रांसफर नहीं किया, हाँ जी, उस सामने वाले भाई को पता नहीं है किया, उसका ट्रीटमेंट मैं अपनी बुक्स में P&L में क्या करता हूँ वो उसका मतलब नहीं है। अच्छा नहीं, वो तो ठीक बात है। जैसे एक सेकंड और होगा मैं कि एक कंडीशन लगाइए कि 1 करोड़ रुपीस तक जो है ना वो तो एग्जाम्प्ट है। अब देयर आर मेनी रिटर्न्स बिटवीन 1 करोड़ एंड 2 करोड़, 4480 इज एप्लीकेबल। What you expert feel in that case? If my turnover is 1.75 crore and I'm सर filing, इसका बेस्ट एग्जांपल जो मनोज जी ने शेयर किया था वो है कि जहां पे डॉक्टर्स ने फ्री सैंपल्स बांटे, डॉक्टर्स हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने फ्री सैंपल ऑफ मेडिसिन दिए, वहां पे उनको वो खर्चा अलाउड नहीं है, बट इट इज स्टिल एन एक्सपेंस, इट इज स्टिल बीइंग क्रेडिटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द वेरियस पीपल ऑफ द वेरियस डॉक्टर्स। तो वो डॉक्टर्स की हाथ में वो इनकम बन जाएगी, बट हॉस्पिटल्स को खर्चा ना मिलते हुए भी वो टैक्सेबल, वो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाए। दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट एग्जांपल है। जिसपाल जी, वो तो मैंने कहा वो पहले भी था प्रोविजन 194 से, उसे कुछ नहीं लेना देना। वो तो अभी मनोज जी को मैंने यही तो कहा है कि वो तो पहले भी प्रोविजन था, अगर इफ आई एम गेटिंग समथिंग तो आई एम टैक्सेबल, वो तो मेरी इनकम है। नहीं, आई थिंक वी शुड प्रोसीड। वी अंडरस्टैंड जो मनोज जी ने शुरू में ही कहा था एंड व्हाई ही वाज एप्रीहेंसिव अबाउट द क्वेश्चंस कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर स्टिल अनक्लियर। आई थिंक लेट्स प्लेस आवर थॉट्स एंड वी शुड प्रोसीड। सुनील जी प्लीज, सुनील भाई। आपकी सुनील भी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। यू हैव टू बी मोर ऑडिबल टू अस। मीनवाइल जब तक सुनील जी लगा रहे हैं, 1 सेकंड के लिए कैन वी टेक अप वन मोर क्वेश्चन जसपाल जी? हाँ प्लीज। So Ajay ji was saying leisure trips. This could be a package deal from hotel resort. So how can we segregate and whether a person has used it or not? I think very subjective question. Ajay ji अगर हमारे साथ होते अभी, I think he has left because of 1 PM. So Gaurav sir, I am here only. अच्छा, pleasure sir. Can you please elaborate कि ये जो चीज है ये recipient के point से तो देखनी नहीं है, from the supplier point it has to be seen. If I'm not wrong, Manoj ji and Jaspal ji can correct me. Or yes, exactly sir. What is your question? You please let us know. Sir, question mainly is that suppose a dealer, a company is organizing a dealer trip, say overseas or in India, in a hotel or a resort. And as Manoj sir said in a PPT, in a slide, that
if hotel is providing like spa or some gym or etc., that will be taxable part. But as of now, we see hotel doesn't charge it item by item. It's a package deal only. You will get a room, you will get services, you will get spa, gym, etc. So how we can ensure that only that part, how much part will be taxable? Sir, I'll take it up. I'll put it also as an alternate example. आपने डीलर्स को बुलाया बट उनके स्पाउसेस भी साथ में आ गए. So while dealer can be only to launch a product, the spouse was never required for that launch of product. So in these mixed kind of situation, how to deal with it? Sir, it is very simple. It is very simple. एक डीलर ने कोई भी जब भी कोई स्कीम देता है, मान लो एक बड़ी कंपनी है, उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे हैं, उसके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसने एक स्कीम, हमेशा एक स्कीम जो आती है वो इट इज अ डॉक्यूमेंटेड स्कीम और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती. सो ऑन अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टारगेट ऑन दैट स्कीम, दैट कंपनी इशूज सर्टेन leisure trips, certain benefits, or which can be given in kind or not. Now in this particular example, it is about the leisure trips. जो जितना क्वेश्चन मुझे समझ आया है उसमें ये है कि हमने कंपनी ने वाउचर दे दिए कि आपका ये ताज होटल का पैकेज है, आप जाके इसको अवेल कर सकते हैं. उसने ताज होटल को या जिस भी कंपनी से वाउचर आने थे उनको पेमेंट कर दी कि ये मेरे डीलर आएंगे ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ दीज वाउचर्स आप इनको स्टे देंगे. एंड दिस कंपनी हैज बुक्ड एन एक्सपेंस और क्रेडिटेड दैट अमाउंट इन द नेम ऑफ दैट डीलर कि मैंने इसको इतने वैल्यू का वाउचर दिया है. दैट the moment the voucher is given to the person required, TDS under 194R will be applicable and that income will be taxable in the hands of the recipient. Now whether this gentleman avails this voucher or not, or whether he avails the voucher in fulfillment of the benefits available to him or not, is not a subject matter of consideration here. हम इसको एक थोड़े से मैं एग्जांपल डिफर कर लेता हूं. उसने कैश में दे दिया या उसने गोल्ड में दे दिया. अब अगर वो बंदा कहे कि मैंने तो इसको रख दिया और मैंने इसको यूज ही नहीं किया तो मेरी इनकम नहीं है. दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर सर. द क्वेश्चन इज व्हाट ट्रीटमेंट इज द सप्लायर गिविंग इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर उसको 194R एप्लीकेबल हो गया, उसने ट्रांजैक्शन डेबिट कर दी अपने बुक्स के अंदर इन द नेम ऑफ अ सर्टेन पर्सन, दैट मोमेंट द इनकम बिकम्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट, वेदर और नॉट द रिसिपिएंट अवेल्स इट और नॉट. आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड द आंसर. मनोज जी, योर थॉट्स ऑन दिस? मेरे ख्याल से जो अजय जी बात कर वैल्यूएशन का बात कर रहे हैं, वी शुड पार्क दिस क्वेश्चन रेफर टू सिबिलिटी फॉर क्लैरिफिकेशन. इस वैल्यूएशन की क्वेश्चंस आ रही है वो वही बताएंगे. हम लोग वैल्यूएशन के एरिया में भी एंटर नहीं कर सकते. अंडरस्टूड. सुनील भैया, योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो आप पूछना चाहते हैं. हाँ, गौरव जी, मैं ये कह रहा था कि इस पे क्या 1 लाख पे जीएसटी की लायबिलिटी भी बन सकती है क्या? जैसे अपने इंटीरियर को 20 लाख प्लस में 1 लाख का परक्यूजिट दिया था. सर, इनकम टैक्स एक प्रोविजन लेकर आया है. देखिए मैं क्यों चुप था. इनकम टैक्स एक प्रोविजन लेकर आया है और इनकम टैक्स अपने आप में इतना खुद कंफ्यूज है करना क्या, अचीव क्या करना चाहता है. तो जीएसटी तो बेचारा तब आएगा जब पहले वो अपने को क्लियर कर ले कि व्हाट एग्जैक्टली इज 194R. क्योंकि मैंने इतने एग्जांपल्स अभी पुट अप किए. मैंने सिंपल एक एग्जांपल टेक अप किया कि आपने एक व्यक्ति को प्रोडक्ट लॉन्च पे बुलाया, 100 डीलर्स आपने बुलाए, आपने उनके स्पाउसेस को साथ में बुला लिया. अच्छा. अब वो कहता है कि 194R विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट लॉन्च. ठीक है, आपकी कॉन्फ्रेंस में प्रोडक्ट लॉन्च के लिए. अब वो 2 दिन एक रिजॉर्ट में रहे, जो स्पाउसेस के साथ रहे. अब स्पाउसेस पे भी खर्चा हुआ. How the valuation will be bifurcated? Manoj ji has sparked that question for future. गौरव जी वहाँ पे वैल्यूएशन का इश्यू आएगा. लेकिन जो मैंने कहा था प्रोडक्ट लॉन्च के उन्होंने एक राइडर लगा दिया. यदि प्रोडक्ट लॉन्च मतलब फैमिली ट्रिप के साथ है. That is what I'm saying. मनोज जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ. अब उसके अंदर जीएसटी की अगर हम बात करें, who is a recipient of that benefit? Now there can be 2 points to this: the wife or the husband. It will always the husband which will be taken. Now if the husband is a proprietor, then it has gone into the company. If the person is not the proprietor but an managing director of the company, how will the company take that perquisite?
as समझ I गया, समझ गया. things are so The complicated. questions here are we are taking up are only the tip of the iceberg. There are vast questions that are still unclear. There is a lot of clarity which is required to be given. Now, ये जो question and form answers की form में guidelines आई हैं, FAQs की form में मैंने guidelines पहली बार देखी हैं, and only 7 pages of going into only 10 questions. It is too less. They have covered the questions in a very narrow manner. There is a lot of clarity which is required from the CBDT, and I think या तो वो अपने आप आएगी या litigation होएगा इस पे. I think it's too early to go into such minute details. मनोज जी, एक फिर झगड़ा वही आता है. गौरव ने जो क्वेश्चन किया कि स्पाउस के साथ आया तो क्या उस पे टीडीएस लगेगा, नहीं है. पॉइंट ये है कि स्पाउस के साथ, सुन रहे नहीं आप? अगर कोई स्पाउस के साथ डीलर आया है तो वेदर इट इज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर और नॉट, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि मैं अपनी किताबों में उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर मानूंगा या नहीं मानूंगा. देन द क्वेश्चन ऑफ टीडीएस. सर परफेक्ट आपने कहा है. ये एक लिटिगेशन का पॉइंट रहा है पास्ट में भी कि डायरेक्टर्स की वाइफ जब मीटिंग पे जाती है, उनके साथ टूर पे जाती हैं, वेदर इट्स एन अलाउबल एक्सपेंडिचर और नॉट. और फैक्ट स्पेसिफिक केसेस में कुछ एक में ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ भी किया, कुछ में अलाउ नहीं किया है. एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी काउंटेड ओवर हियर आल्सो जब हम 184R की बात करेंगे. सो इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स. ये फैक्ट स्पेसिफिक सिचुएशन रहेंगी सारी की सारी, whether it's a benefit or not, whether it's a business requirement. I think we can divide this entire question set into 3 parts. Number 1, what are the perquisites which the government is wanting to target under 194R and which are not covered under the existing TDS provision? That one of the first thing is should be clear. Number 2, the valuation of the perquisites under 194R need clarity. And number 3, in whose hand is the government wanting to tax this? जैसे मैंने example दिया, managing director going with the spouse, is it the income of the company whose managing director is he, or is it a personal income of that particular managing director? TDS किसका कटेगा? सर इसके अंदर तो उन्होंने, अगर आप क्वेश्चन को देखिए तो बहुत क्लियरिटी दे रखी है कि यदि मैनेजिंग डायरेक्टर जा रहा है, इट इज गोइंग बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द प्रोवाइडर. तो कंपनी के हाथ में टीडीएस कटेगा, कंपनी के हाथ में कटेगा. बट नॉट, आपने ही इस पॉइंट का आंसर किया था पहले कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ. नहीं जसपाल जी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दिया जा रहा है. सर that is very true, but I am just putting a small thought to you. When the benefits will be extended to the spouse, I think the recipient company will have an objection being a recipient of that, because you as a supplier distributor are getting some benefit from the OEM. OEM उसको कितनी कर्टसी एक्सटेंड कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है. कंपनी उस पार्ट पे इनकम लेते हुए it will be objecting. I'm putting facts to you. आपका जो इशू है ना, वो इशू है क्लैरिफिकेशन का कि इन केसेस में क्या होगा. कंपनी वर्सेस डायरेक्टर की लड़ाई है. ये कंपनी वर्सेस डायरेक्टर की लड़ाई हो गई, ये इनकम टैक्स की लड़ाई नहीं है. So I think with these 3 questions, मैं एक छोटा सा off I'm taking the discussion off to some other angle. मैं मनोज जी और जसपाल जी से within this week I'll coordinate, and I would also request Himanshu ji and for that matter Shubham Ketan ji also. We will come out with a small clarificatory booklet from on 194R from income tax and GST perspective. So I'll take their input. So let me draft that particular booklet. I'll send it to respective experts, and within 1 week we will share it with all the star members in the coming day. I think that is a good idea. गौरव जी अभी 1 हफ्ते का टाइम मत लो इसके ऊपर, क्योंकि इस पे अभी मुझे लगता है कि 1 महीने में काफी क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की साइड से आ सकते हैं. मनोज जी, गवर्नमेंट के अगर आप गवर्नमेंट की वेट कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट की वेट कर रहे हैं, सॉरी, तो आप मेरी टेक माय वर्ड्स, हमने जीएसटी में भी जिस तरीके से देखा है, ये मैटर हाई कोर्ट तक पहुंच जाएगा, गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन नहीं देगी. हमने काफी लोगों के व्यू भी इस टाइम, क्योंकि अभी ना ये बहुत नेसेंट स्टेज पे, इसके अलावा बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझना जरूरी है. असल में मनोज जी, व्हेन इज इट इफेक्टिव फ्रॉम?
जुलाई से आ चुका, वैसे तो इफेक्टिव हो चुका है जुलाई से। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि 15 दिन तक ये जो इफेक्ट हो चुका है टीडीएस लोग नहीं काटेंगे, तो फिर ये भी एक और बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक वी नीड टू फॉर्म सम ओपिनियन एज एक्सपर्ट्स एंड लेट अस हेल्प ऑल द प्रोफेशनल मेंबर्स। वो व्यू गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वी कैन नॉट बी करेक्ट ऑलवेज, बट वी नीड टू हैव एन ओपिनियन। दैट इज माय स्मॉल रिक्वेस्ट टू द वो एक्सपर्ट। जो ओपिनियन देंगे वो कंप्लायंस के एंगल से देंगे, लीगलिटी के एंगल से नहीं देंगे। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। So, Shubham ji, Venu ji, all the learned experts who are there, I would circulate the booklet. Shubham, do you have time for the contribution from GST perspective on this 194 thing? Surely. Shubham ji, 194 income tax में जो नया TDS provision है, there will be parallel implications of GST. Venu ji, can I circulate those questions to you? We'll compile those questions. Yes, sir. Yes, definitely. And we will circulate as a compilation of both income tax and GST. So I will send it to all the experts of income tax and GST on Monday, so that by Saturday we compile and close. Yes, sir. Palji, Manoj ji, Manshu ji, Suresh Agarwal ji. Right, sir? इसमें एक और इशू भी आता है कि जैसे जो डीलर्स हैं उनको जब कोई ट्रिप दिया जाता है तो दे विल ट्रांसफर दैट ट्रिप टू समवन एल्स, देयर फैमिली मेंबर्स और देयर फ्रेंड्स की भाई मेरी जगह आप चले जाओ। तो यहाँ पे ये आता है कि जो टीडीएस जो कटेगा वो टीडीएस तो कटेगा जो डीलर है उसका, बट बीइंग अ जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर ही हैव अ 2 टाइप्स ऑफ इनकम, कि एक जो उसको मिली डीलर से एज ए डीलर, और सेकंड जो उसने आगे फॉरवर्ड करी फॉरवर्ड में नहीं आएगा, वो सप्लायर फॉरवर्ड में इन दी कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सेल हो जाएगा अगर उसको अपने फैमिली मेंबर। सो जीएसटी फैमिली मेंबर्स नहीं, ऑफवर्ड साइड। आई अंडरस्टैंड योर इशू, बट जीएसटी में सपोज मैंने अपने ब्रदर को वो पास कर दिया या अपने फ्रेंड को पास कर दिया, सो व्हाट आई एम पासिंग इज ओनली आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नॉट इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देयर आर नो बिजनेस टर्म्स टू दिस, नो जीएसटी। एटलीस्ट जीएसटी में हमें थोड़ी क्लैरिटी इनकम टैक्स से ज्यादा लगती है इन चीजों। So I think I now request we can conclude the session for today, and I hand it over to Suresh ji. गौरव जी, ये फर्दर अभी हमें कोई आज 47 जीएसटी काउंसिल पे आज कुछ नहीं करना, नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। सुरेश जी 130 is already done, so मैं इसके लिए दोबारा आप सबसे टाइम लेके एक बहुत जल्दी ट्यूसडे को या वेडनेसडे को एक मीटिंग रख रहे हैं, ठीक है? एंड हिमांशु जी बी रेडी, वी माइट हैव टू आल्सो सर्कुलेट अ वीडियो ऑन दिस। आई विल कोऑर्डिनेट विद यू। श्योर। तो जैसा कि आज की हमने मीटिंग में देखा कि हमने सेक्शन 194 के अंदर इतना डिस्कशन किया कि अब हम तो कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग को, और इसके लिए अब हमने विचार भी किया कि अब हम उसके बुकलेट की शेप में क्वेश्चन आंसर को निकालेंगे, और गौरव जी ने कहा कि नेक्स्ट वीक हम अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे। सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने क्वेश्चंस को आप हमारे यहाँ तक भेजिए थ्रू स्टार ग्रुप के थ्रू, ताकि हम सारे क्वेश्चंस को कंपाइल कर सकें और अकॉर्डिंगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सके कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएसटी एंगल से हमें उसको कैसे आज के तारीख में देखना है। जैसे मनोज जी ने एक्सप्लेनेशन दी कि अभी हम उसको लीगल वे में तो नहीं दे पाएंगे, बट अपना व्यू तो हम दे ही पाएंगे कि कंप्लायंसेस के पर्पस के लिए और अदरवाइज ऑल्सो, कि हमें आज के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार हमें क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है जीएसटी लॉ में एज वेल इनकम टैक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने 194 रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते हैं स्टार ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि गौरव जी और हम सब मिलकर इसको कंपाइल भी कर सके और अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के साथ में आपको बुकलेट के शेप में आपको इसका सब कुछ दे चुके हैं। इसके लिए आप हमें सहयोग कीजिएगा। बाकी जो आज की मीटिंग रही बहुत ही फ्रूटफुल रही। पहले शिवम खैतान जी ने हमारे को एनलाइटन किया ऑन द सेकंडमेंट ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में, मैन पावर सप्लाई के बारे में ले जाते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तक डिस्कशन किया। उसके बाद में मनोज जी ने हमारे को एलोबरेट किया सेक्शन 194 पर। हमारे जसपाल जी ने उसको सप्लीमेंट किया। गौरव जी हमें टाइम टू टाइम बताते रहे। हिमाचल जी ने भी अपना सहयोग दिया, जो भी बोल पाए बहुत अच्छा उन्होंने सब बताया, और वेणुगोपाल जी और सभी ने हमारा सहयोग दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे को जो अपेक्षा रहेगी आपसे क्वेश्चंस की 194 पर, और आगे हम नेक्स्ट वीक में कोशिश करेंगे
कि जल्दी से ही सेकंड मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दें, जो आज रह गया उसको हम अगली मीटिंग में कंक्लूड करेंगे। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गौरव जी ने जो किया बहुत अच्छा, और आगे हम करते रहेंगे। और आगे अभी इस बार हम थोड़ा लेट आए थे वेबिनार पर कोशिश करेंगे आगे हम पीरियडिकल इंटरवल पर आते रहें थ्रू वेबिनार, और पॉसिबल होगा तो सेमिनार की भी कोशिश करेंगे। और विद दिस साथ में ये भी कह दो ना कि वी आर सॉरी कि हम चाहे सर्व नहीं कर पाए, तो प्लीज जरूर ले सर वो मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया, सर मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि हम सेमिनार की भी कोशिश करेंगे। वो सब समझ गए कि वेबिनार पे हम चाहे नहीं कर पाए, लेकिन अभी हमारे मेंबर्स बड़े खुश हैं इसी बात से कि कम से कम हमने शुरुआत करके इतने हॉट टॉपिक पर गए और आगे इसको बुकलेट की शेप में देने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो आज रह गया उसको डिस्कशन करेंगे। इसके लिए गौरव जी और हम सब मिलकर नेक्स्ट मीटिंग को जल्दी ही प्लान करेंगे और जल्दी ही अपने मेंबर्स को इंटीमेट करेंगे कि सेकंड मीटिंग कब करने वाले हैं। With this words, I We'll thank also you. be circulating the PPT of Shubhamji today. Yeah, we are circulating the PPT of Manojji as well as Shubhamji today itself Manojji की भी for understanding to all. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब में योगदान दिया और अटेंडेंस की। और ऐसे ही करते रहिएगा और अपने क्वेश्चन अपने भेजिएगा 194 पर, ताकि हम अपनी बुकलेट तैयार कर सकें जल्दी से जल्दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।